Hello and welcome to the Drawing Room Experts. This is Zaib, and with me, as always, I have Navaid and Zain to talk about something really sad, but also almost like a celebratory episode of none other than the great Shane Warne. Guys, how are you doing? Good, good. Good. It's been a somber week, I but know. Hi, I like there's been a lot happening, especially like with the Australian tour. yeah, Uh, Hmm. उसके साथ साथ ये like पहले तो वो Rodney Marsh, I think right before day one, back to back, I that think. that Yeah. that news came through, and then the Peshawar blast happened, Hmm. and then I think right after that, a few hours later, Peshawar Yeah, blast within came. a few hours of each other. Yeah, Yeah. The whole Shane Warne thing came up, which uh, which was, yeah, I mean, it was just odd. That Australian team is in Pakistan for after 24 years, and Yeah. this is all relevant to them kind of information. Like not yeah. one of It's these is not as like as isolated. an aside, it's so weird to see कि उसने चंद घंटों पहले ही एक ट्वीट भेजा था, you know, Yeah. expressing Tribute to Rodney Marsh. Yeah. that it's Condoling so him, weird to yeah. see that thing out there, right? And that person is no longer there. I mean, it reminds me of when a couple of years ago Kobe Bryant passed away. And Hmm. Yeah. again, his death was sudden and shocking. But a few hours ago, he sent out a tweet to LeBron or something because he had passed his points total or whatever. But it Hmm. was still out there as a fresh tweet, and that the guy's gone. It's such a social media sort of modern 21st century kind of weirdness because that person is gone, but Hmm. their digital imprint is all still there. It's going to Still linger, there. Yeah. basically, Yeah. right? Yeah, I So mean, I think Dean Jones का भी same चीज थी कि he Hmm. had tweeted something or like said yeah, something on social media, and then I think उसका भी कुछ scene था, like birthday थी या कुछ था, something was happening around his social media, उसने tweet की थी, and Hmm. then after a couple of days or hours, he passed away. और then अभी recently मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है कि uh, किसने क्या किया था, Dean Jones, and then I don't know, I'm just thinking of someone अभी कोई recently uh, within a few, अरे हाँ, what's his name, जिसमें, अरे नहीं, तुम लोगों को नहीं पता होगा शायद, एक्चुअली तुम लोगों ने वाइट कॉलर देखा है शो? Heard of it. देखा नहीं है. White Collar, is that the show जो जिसमें Matt Bomer है, right? guy is हाँ, like मैट बॉमर, हाँ. जिसमें यार वो एक बंदा होता है basically he's a criminal but he's helping the FBI. राइट राइट राइट, हाँ, Yeah, I एग्जैक्टली. तो think I saw a उसमें few seasons of that actually. उसमें उसमें जो मैट बॉमर, जो यानी कि जो क्रिमिनल होता है, उसका जो That one. दोस्त होता है, मोटा सा, मोटा सा Hmm. गंजा वाला, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक्टर एक्टर है फ्रॉम ब्रॉडवे, ये है ना, तो उसकी वाली Hmm. वो है उसका, लाइक ही पास्ट अवे, आई थिंक earlier this year or later half of last year something. तो उसने ट्वीट की थी कि ऐसी कोई ना बड़ी अजीब सी ट्वीट की थी कि ऐसे कि if this was to be my last thing, or what I would say to everyone is, like be happy or something करके ना, like Hmm. generally लोग ट्वीट करते हैं कि like help each other इस तरह करके ना वो, Yeah. and that was actually his last tweet. Hmm. तो इतना weird सी चीज़ थी, और वो लाइक मेरे लिए weird इसलिए थी क्योंकि मैंने वो ट्वीट, या पता नहीं इंस्टाग्राम पोस्ट थी, either of those two, मैंने वो देखी है, Hmm. and then after that I found out that he passed away. तो मेरे लिए तो और अजीब सा था कि like I saw that first, Yeah. and And then then I you heard get. कि Yeah. वरना Hmm. होता है ना कि आपने सुना हुआ होता है, then you see the post and then you're like, oh यार बेचारा, देखो उसने ये पोस्ट किया था, but then you see it in with the lens of कि यार ये अभी जिंदा ही है, इसने ऐसी ट्वीट करा Hmm. या पोस्ट की होगी, and then you find out that he's gone. तो यार इस तरह की बड़ा, सैन इज एब्सोल्युटली राइट कि वो जो डिजिटल इम्प्रिंट है ना, वो बड़ा एक ऑड Yeah. सिचुएशन होती है उसकी. Same. um, यही जैन ने मुझे न्यूज़ दी थी शेन वॉर्न की भी. Like I woke up and his text was like Shane Warne is dead. I'm like what? Because उसके 2-3 दिन पहले I'm like yeah, looking at tweets and how he was also excited about the Pakistan tour and हाँ, everything. So it was like what the hell? Like I couldn't register that. I had to like I had to make sure ये साला सही भी बोल रहा है कि नहीं. I had to make. I went to the internet like Yeah, it's so did crazy. that really happen? And yeah, it was. Yeah, it was. नहीं नहीं, it was मैं भी जब उठा था, लाइक रात को मैं डे वन देखकर सोया था, लाइक डे Hmm. वन पूरा तो नहीं, ऑलमोस्ट लंच के बाद तक थोड़ा देखकर सोया था मैं.
Hmm. पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का। फिर जब उठा तो लाइक मेरे ऐसी न्यूज़ फीड में लिखा था शेन वॉर्न पास, मैंने कहा शेन वॉर्न पास, लाइक ये क्या मजाक हो रहा है क्या? Yeah. लाइक फिर मैं जब उठ के लाइक प्रॉपर्ली देखा, मैं कहा शिट, ही एक्चुअली पास्ड अवे 52 इयर्स यंग, Yeah. मैं तो कहूँगा Yeah. He's 52 इज 2 नथिंग। Yeah. अभी And मैं I was एक और actually looking through his, Twitter, and weirdly enough, a few days ago he had उसने कोई एक picture post करी थी जिसमें he was looking fit and lean from years ago, and he's like, I'm working towards, being that shredded again. It was like a week हाँ ago. हाँ Yeah. कुछ उसका And चल रहा था, लाइक yeah, ही वाज and लाइक ऑन अ डाइट और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। yeah, अभी I भी don't मैं know. एक आर्टिकल ऐसी सजेशंस में आया था मेरे भी, हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले ना, वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था कि लास्ट मोमेंट्स, लाइक सैड डिस्क्रिप्शन ऑफ शेन वॉन्स लास्ट मोमेंट समथिंग, आई डोंट नो, मे बी उनकी उसकी डेथ की डिटेल्स अब आई होंगी कि अब जिस तरह Hmm. वो नहीं था बॉब सैगेट जो मरा था अभी कुछ हाँ. एक दो हफ्ते पहले, तो Yeah. उस वो भी तो ऐसे यंग सा ही बंदा था, और लाइक उसकी Yeah. जब I got डिटेल्स आई हैं तो इट वाज two. आल्सो सच अ वियर्ड थिंग कि वो किस तरह से मरा है। तुमने पता है किस तरह से मरा था वो? No, No, I I'm don't. not introduced now. वो होटल रूम में था अपने, एंड आई थिंक ही फेल और बम्प्ड हिज हेड ऑन समथिंग, लाइक वो Oh, इन द बाथरूम और समथिंग, एंड देन ही, one of those. हाँ नहीं उठा, एंड देन ही वाज फाइन, ही टुक अ शावर, मेरे ख्याल से उसने खाना वाना भी ऑर्डर किया था, जो भी किया नॉर्मल जैसा होता है, Hmm. एंड देन ही वेंट टू स्लीप, एंड देन ही डिडंट वेक अप, वो Hmm. कंकशन इंजरी की वजह से। Concussion था. तभी वो मैंने उसमें पढ़ा भी था कि बाद में कि जब आपको कंकशन या हेड इंजरीज होती है ना, तो आप सोना बिल्कुल नहीं है आपको, लाइक इट्स, आप यू शुडंट स्लीप Hmm. अंटिल आपको डॉक्टर एग्जामिन कर ले, लाइक इफ यू फील ओके, लाइक अगर सर पे कोई बहुत इम्पैक्टफुल इंजरी पड़ी है तो सोना तो बिल्कुल नहीं है, लाइक वो मना करते हैं पेशेंट्स को कि सोए ना ये बंदा, क्योंकि वंस ही Hmm. स्लीप्स देन इज डन। Hmm. तो वो ऐसे मरा था, वरना बहुत से लोग It's समझते थे कि हार्ट difficult. अटैक आया होगा, मतलब हार्ट अटैक आया, accidental था basically. एक्सीडेंटल, लाइक इट्स अ वियर्ड थिंग। जब उसका पोस्टमार्टम आया तो उसका पता लगा कि लाइक ही एक्चुअली हैड अ हेड इंजरी एंड देन ही Nice. स्लेप्ट। That's crazy. तो इसका इतना भी यानी कि रिपोर्ट नहीं आया right with for Shane. I think they it was supposed heart attack था, but they don't. I think exact हाँ, नहीं पता right कि क्या था Yeah, exact. yeah. पता I mean, नहीं, there's लाइक a वो lot of a lot of reports coming out, but they're both mainly just he said, she said kind of deal. Nothing official, Yeah. as far as I know. आई थिंक ही वाज on vacationing with his family, was it, was he there by himself I don't to think his like family. Indonesia? He Indonesia. has a property there. I think he had one. So Yeah, he Thailand. Oh, was he's a property, अच्छा, I thought he was just vacationing over there. no, it was his own property. I think, Yeah. but तो but anyway, I think ये तो खैर एक somber details थी around his passing away. What I wanted to talk about here is essentially celebrate the man, because Hmm. there's so many memories, like हम तीनों की Oh growing yes. up, Yeah. like 90s में, like this guy was the guy, like yeah, Yeah. he was right up there with Wasim Makar level, McGrath level, Hmm. like चार पांच लोगों के, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, चार पांच लोगों के नाम नॉन क्रिकेटिंग इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को पता होता था, जिसमें से एक शेन वॉर्न नाम होता था। Yeah. तो दिस इज नॉट लाइक सम रैंडम, ऑल्दो No. लाइक सबकी सबकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स द गेम, बट दिस गाय इज समथिंग एल्स, Yeah. कुछ और ही I लेवल है think उसका। he was the master of the most difficult bowling technique. I think leg spin is the most difficult bowling technique. Fast off spin, her cheese is relatively easy to learn and master, but leg spin is very like what I think leg spin सबसे मुश्किल art है, and he was like just लेग the स्पिन, master of I think it's a common belief because first of all, control karna mushkil hai, and to it. Yeah. be successful, you really have to like flight the ball, which is basically Hmm. if you're bowled, that's the most vulnerable state you're in, right? If you really Yeah. flight the ball. Yeah. The mean leg spinner's strike rate is supposed to not strike rate, but economy Hmm. is not supposed to be or not expected to be that high because it's such a high difficulty, Yeah. राइट, uh, high difficulty skill to master, and plus Hmm. you're about to get it wrong and then you're smacked around, which is Yeah. why and it was a dying art at that time दैट्स व्हाट इट वाज, when Yeah. he दैट्स व्हाट आई हैव came रेड up एज वेल कि in the like 90s. prior to Shane Warne के, I think the last Ab- recognized leg Abdul spinner Qadir was the Abdul last one. Qadir Solid. was, Yeah. and then he had retired in like late 80s or something. I think he Yeah. didn't even like do the or Hmm. mid 80s. So and Shane Warne made his debut like early 90s, probably, Yeah. Yeah. right? So like 94, for 93, I think. I think 93, हाँ, so 94. the mid 90s. So like for a long period of time there was no leg spinner, जिस तरह से अभी हम लोग एक गैप से गुजर रहे हैं एक वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर के,
लाइक देयर इज नो वर्ल्ड क्लास, Yeah, we लाइक don't मे बी have. अश्विन, अश्विन को No, लोग कहते हैं, बट कम ऑन, लाइक वो वाला लेवल नहीं है जो मुरली का था, Muralidharan सकलैन का का था, था, Saklan का इवन था. हरभजन का था, लाइक दे वर, दीज गाइज वर लिटरली फियर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Hmm. तो अभी जैसे उस गैप से गुजर रहे हैं हम, आई थिंक इवन लेग स्पिन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम, लाइक अभी कोई वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर तो नहीं है. लाइक वी हैव अ बंच ऑफ गुड लेग स्पिनर्स, लाइक Yeah, शादाब इज प्रॉब्ली वन ऑफ देम. ऑस्ट्रेलिया में कौन है? I think Like Yashir ऑस्ट्रेलिया में Shah तो कोई, is a good हाँ one. यासिर शाह प्रॉब्ली, Yashir Shah is हाँ. a good one. बट वो नहीं है कि जो एक होता है ना कि यार Hmm. वर्ल्ड नहीं, क्लास उन लेवल उस जिसको लेवल ट्रीट का किया तो जाए. कोई भी नहीं है जो अभी पहले ये जो लेजेंड्स थे उस लेवल में, तो खैर कोई भी देखा जाए तो टू बी ऑनेस्ट बॉलिंग साइड में इस वक्त कोई भी वैसा नहीं है. लाइक आप किसको कह सकते हो, लाइक ऑन द लेवल ऑफ ब्रेटली एंड शोएब अख्तर व्हेन इट कम्स टू पेस. अब space, वो भी no, नहीं है. there's no. देयर इज नो वन हु यू एक्सप्रेस कॉल पेस तो बहुत लीथल. बहुत, I think आई मीन एक्सप्रेस इज, स्टार्क है. Zain was स्टार्क. maybe the last great bowler, हु. fast bowler. हाँ इसके स्टेन. बाद से we haven't really हाँ, seen any. स्टेन. It's like आई that थिंक वो भी transcendent. था यार, जॉनसन, मिटल जॉनसन स्टेन के बाद नहीं था. Yeah, I think नहीं, they're दोनों around. आसपास, दोनों साथ ही थे, दोनों एक हाँ, साथ. मतलब वो ही I एक think टाइम लास्ट थे वो Johnson दोनों. retired लास्ट, before Zain. हाँ जॉनसन पहले रिटायर हुआ था, स्टेन अभी रिसेंटली हुआ रिटायर, तो हाँ. Yeah, not स्टेन since वाज the लास्ट ऑफ. I don't think there was a या like a world class or transcendent bowler. बहुत. अच्छा अच्छा, ये But बताओ तुम लोगों की अर्लीस्ट मेमोरी क्या है शेन वॉर्न की? शेन वॉर्न maybe की. earliest memory I think uh, was semi-finals of 1999 के World Cup में. 99 की, 90s में कोई तुम्हें याद नहीं है उसका आई थिंक कुछ? 96 का Was वर्ल्ड that कप मुझे याद है. like I don't remember it that vividly, to be honest with you. My brightest memory was the 1999 semi-final because that was basically his resurgence. Because I think prior to that he was going through a lot of क्या कहते हैं, off the field controversy, doping Hmm. issues. नहीं, वो तो This 2003 में हुआ था, लाइक ही वो कुडंट प्ले बाद में दैट होल वर्ल्ड कप. maybe he was being dropped, and I think he had a lot of disciplinary issues on the side या with the previous ही हैड अ Australian captain. फॉलोइंग आउट विद स्टीव वॉ एज वेल, कुछ मसला चल रहा था. Well, yeah, that continues to up to his death actually. या But that World Cup, I think he was the man of the match of the semifinals and the finals. I think आई he थिंक was the सो. man of the match in one of those या two. But he basically took over the tournament later on. And I think he's the one who made that comment, right? He dropped the World Cup to. Did he? I thought that was Steve Waugh who made the No, comment. it was he dropped the कौन था? catch. It was और वो किसने drop? अब Gibbs. हर्ष गिब्स ने किया था ना. अब वो Gibbs ने किया अभी था, भी but उसमें that पता was है, Warne द comment. फनीस्ट थिंग इज कि अभी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी ना. तुमने वो देखी क्लिप, जब वो प्रैक्टिसिंग अपना कैचेस प्रैक्टिस कर रहे थे, ओके. तो उसमें उनके किसी एक प्लेयर ने ड्रॉप्स द कैच, तो पूरी टीम हर्षल गिब्स करना शुरू हुई उसे. तो इट मीन्स कि वो एक अभी तक इंटीरियर चल रहा है. उनके कल्चर में वो एक चीज़, इट्स एन Yeah, इनसाइड because जोक that's टू what दैम. he एम्बेड हो गई dropped. है. या इट्स अ ह्यूज रेफरेंस. और द फनी थिंग है, उसने भी ड्रॉप भी ऐसे ही किया था, लाइक अप कप जो होता है ना, अपवर्ड हाँ, फेसिंग फिंगर्स कप अप. करके, हाँ. जो Reverse cup. जो हर्षल रिवर्स कप को, हम्म. तो जो हर्षल गिब ने एक्चुअली ऐसे ही ड्रॉप किया था, एंड देन आई थिंक ही ड्रॉप, It's who it's did he it's drop? shocking because he's such a great fielder too, Oh right? yeah, या yeah, yeah. मतलब Like साउथ अफ्रीका तो pre पूरी that टीम and ही. post that, he has been like amazing. But या. like he was Jonty Rhodes level type का बंदा था, Jonty हम्म. Rhodes के होते हुए. Like a या. spiritual successor of Jordan या. हाँ, Rhodes. there you go, there या. you go. तो it's such But a weird thing कि वो उसका comment, like it's just like a, a almost like a phrase to for the Australian team, or like एक reference है, लेकिन but it's a हम्म. phrase now for them. Like उनके मजाक में भी कोई कैच ड्रॉप होता है तो दे बेचारे हर्षल गिब्स की लग रही होती है उसकी, like वो उसकी उसकी सब ले रहे होते हैं indirectly. Mary earliest memory, weirdly, was kind of like almost like a memory that maybe Shane Warne would not want to remember, मेरी भी and that वही है. was that was तुम्हारी क्या है, तुम्हें पता? getting मेरी smacked was in around. Sharjah. That was one of the Sharjah tournaments जिसमें पाकिस्तान नहीं था. जिसमें Weirdly enough, I think the तेंदुलकर ने only कुत्ते की तरह मारा था. जिसने तेंदुलकर ने इतना धोया था शेन वॉर्न हाँ, को, वो दैट्स इतना एग्जैक्टली माई धोया मेमोरी, था मेरी भी यही कि मेमोरी है. बेचारा वो यानी कि he was सचिन like. तेंदुलकर ने जो शेन वॉर्न को धोया है, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसे बेकार से एक पार्ट टाइमर को नहीं मारता कोई या वो बहुत शारजा की पिच जबरदस्त पे, और सीरीज थी धनाधन एक्चुअली. छक्के, लाइक उस वक्त हाँ. मेरे ख्याल से सचिन तेंदुलकर वाज प्रोबब्ली पीक ऑफ हिज Peak. पावर्स, He was. He Wow. was. कि कोई दुनिया का बॉलर उसको लाइक
करीब नहीं आ सकता था उसके, लाइक हर एंड देन मैच में शेन है वॉर्न। वो सेंचुरी मार रहा था एंड आई हाँ, आई रिमेंबर इट वाज हिज बर्थडे टू। उसकी एक वन ऑफ द मैचेस वाज बर्थडे। तेंदुलकर's बर्थडे एंड उस पे भी उसने सेंचुरी मारी एंड या इट वाज हाँ, हाँ। या वो मेरी प्रॉपर मेरी भी वही मेमोरी है, मेरी सरप्राइजिंग। भी वही मेमोरी है कि वो जो कुत्ते की तरह धो रहा है वो, और उसमें ज़्यादातर जो हाइलाइट्स आती है ना, वो फास्ट बॉलर को मारते हुए नहीं दिखाते इतना, फॉर सम हुँ, रीज़न। लेकिन या शेन वॉर्न को सुताई कराते हुए वाली हाइलाइट्स में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं सबसे उसकी। या तो ऊपर से आई उस पे थिंक कमेंट्री भी 97। उसकी थी यार टोनी क्रेग हाँ, की। टोनी ग्रेग की उसका कमेंट्री थी, मज़ा ही और यस। होता था। दैट वाज लाइक वन ऑफ द वो जो बेस्ट। जो तो होता है ना कि ऊँचे-ऊँचे छक्के, और शारजा इज़ हाँ, नॉट अ मैसिव ग्राउंड इन इटसेल्फ, या वो छोटा-सा ग्राउंड है, लेकिन वो उसमें भी अगर वो फ्लैट भी मारता है ना तब भी छक्का ही होता है या आराम से। या लेकिन वो तारे वाले छक्के नहीं होते, लाइक वो ज़लील करने वाले, कि भाई ये इतना ऊँचा जाएगा कि तारा वाला बना के, हाँ। और वो उसने स्ट्रेट पे, यानी कि स्ट्रेट मिड स्ट्रेट ऑफ पे खेलता था। यहाँ मारा उसका था। हाँ, तेंदुलकर का बेस्ट चीज़ ये थी कि उसका वो हिज स्ट्रॉन्गेस्ट वाज़ जो सबसे ज़्यादातर लोगों का वीकेस्ट पॉइंट होता है व्हिच इज़ स्ट्रेट मिड फ्रंट ऑन ऑफ द विकेट। मिड हाँ, हाँ, हाँ। लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, स्ट्रेट दैट्स ऑल ही प्लेड। मतलब जब स्लॉग करने आता था, एक वो तभी तो उसकी और एक इंज़माम, टेक्निकली साउंड, हाँ, दोज़ टेक्निकली 2 तभी गाइज़ तो ये वर लोग लाइक साउंड थे इतने, तभी टेक्निकली इतना साउंड एग्ज़ैक्टली या थे, इनको आउट करना मुश्किल होता था, क्योंकि वो स्ट्रेट बैट से खेलते थे, स्ट्रेट और बैट। Do you ज़्यादातर guys remember पिचेस this अराउंड। live? Because I've seen this, but I think I saw reruns of this. मैंने live मुझे याद मैंने भी नहीं, रीरन्स ही देखे थे, नहीं आई मैंने डोंट थिंक आई लाइव वॉच्ड। देखा था I एंड don't मैं अच्छा, live memory की बात कर रहा हूँ It मैं, was not so not weird. that. I still remember where I saw it. So बचपन में like I was मैं धत्ती द क्रिकेट का right, like I used to watch everything. हम लोग बहरीन में थे and उस वक्त जो वो डिश वगैरह होती थी ना, पहले तो डिश होती थी, डिश लगती थी, there was no हाँ, हाँ, cable हाँ, nothing right. हाँ, हाँ। तो डिश उस वक्त थी बहुत एक्सपेंसिव, हर किसी के पास होती नहीं थी और ये सीरीज चल रही थी। आई थिंक समर का ही टाइम था क्या था तो समर ही होती थी शारजा वन में। ऑफ माय फ्रेंड डैड्स फ्रेंड्स इंडियन थे वो, उनके पास डिश थी एंड उनके घर में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था क्रिकेट में। अच्छा। So he used to drop me off before going to work to his place, and like some random kid sitting in the lounge watching just the match. तो उनके घर मतलब उनको कोई उनकी इंटरेस्ट ही नहीं घरवालों की दिया भी था हटती मैच होगी, में। भी कहाँ से आ जाते हैं एक रोज़। और कोई साला एग्जैक्टली। संकीर्त व्यक्ति आ गया हमारे नाउ घर दैट में। आई थिंक अबाउट, लाइक साला मैं पूरा मैच बैठ के वहां देखता था, दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज देयर फॉर एंड वो पूरी सीरीज मैंने उन्हीं के घर पे देखी थी एंड या ओह गॉड! मैं अकेला बैठ के लाइक मैं तो देखता था सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एम्बैरेसमेंट का सुन के मैच। ये देखा भी नहीं कि कोई पाकिस्तान का मैच हो तो समझ आया था। साला हाँ। पाकिस्तानी बच्चा आया देखने, मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच बैठ के देख रहा होता था। पता नहीं दैट्स तीसरी वेयर आई टीम सॉ कौन-सी दैट। थी? कोई तीसरी, यानी कि ट्रायंगुलर सीरीज़ थी जो ज़माने में हाँ, नहीं नहीं पाकिस्तान ये में बहुत होती। ज़िम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, दैट वाज़ अ ट्रायंगुलर सीरीज़। हाँ, पता नहीं क्या होता था और उसमें। हिस्ट्री की पहली थी जिसमें पाकिस्तान नहीं था शारजा में, शुगर। हाँ, राइट, राइट, राइट। तो दैट वाज़ माय अर्लीस्ट मेमोरी, आई थिंक हुँ, फ्रॉम लाइक वाचिंग। अगर लाइव में कहूँ तो ज़ैन इज़ राइट, आई थिंक 99 वर्ल्ड कप इज़ प्रोबब्ली द हुँ। लाइव मैंने जो देखा था। आई थिंक फाइनल Yeah. में, 96 का सेमीफाइनल मुझे इतना याद नहीं है, 96 का मुझे इतना याद या नहीं No, है। his जो skill in the semi-final turned around the game basically. हुँ, तो हुँ, उसने late out हाँ, early wickets लगा ली हैं. He turned it around. और या पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान had no answer basically in और the फिर वो final. आई थिंक राइट आफ्टर द 99 वर्ल्ड कप 2000 में एक इन्फेमस सीरीज़ हुई थी, 2000 या 2001 में पाकिस्तान की। यू रिमेंबर दोस? You mean in Australia? नो, इन शारजाह, जिसमें 50-50 रन तो पे टीम आउट Yeah, हुई 50-50 थी। पे आउट देखो हो गए थे। या it दोनों is so इनिंग्स। embarrassing, but because I sometimes feel like कि यार I think नहीं हुआ था ये because it was so embarrassing. Like या ऐसा कोई we जोक है don't ये। 453 राइट? हाँ, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक अ जोक कि इट्स दैट शारजा में टेस्ट एम्बैरेसिंग। मैच हुआ था जो कि होते नहीं है. I think that was one of हाँ, the first ever. And they हुँ, got bowled out 54, 57. Imran Nazir, all these guys are लाइक completely like outclassed. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और सोचो पाकिस्तानी स्पिन, टीम। और लाइक शारजाह शारजाह की पिच पे, लाइक And Shane Warne basically took them to the शेन woodshed. वॉर्न। Really ओह या, terrible. मुझे Like याद है, मुझे याद है, मैंने कहा शेन वॉर्न साला ये क्या है, लाइक अनबिलीवेबल उसकी स्किल सेट थी। या मैं भी वो, और एक और चीज़ लाइक मुझे दिमाग में आ रही थी कि आई थिंक नॉट मैनी, कोई ऐसा 90s किड्स में कोई एक शायद बहुत कम ऐसे लोग हों जिन्होंने उसका एक्शन ट्राई नहीं किया है, ट्राई टू एवरीवन बॉल लाइक हिम। व्हेन आई यूज्ड टू बॉल लाइक हम लोग गली क्रिकेट खेलते तो सब करते थे ना, बोल चाहे लेग स्पिन हो, ऑफ ब्रेक हो, फास्ट, हर बॉल में हाँ, हर चीज़ करता हर था। बॉलर का छापा तो होता द था। ओनली एक्शन आई ऑलवेज वेंट टू फॉर लेग स्पिन वाज शेन वॉर्न 'cause ओह या, या एब्सोल्युटली, क्योंकि बड़ा एक एक तरह उसमें एक it's great for लेज़ी spin, एरोगेंस it's होती थी। tough या हाँ, for control. Like spin होती है हाँ। action से if you try it, but control नहीं होता. Like इतनी ऊंची flight आती है कि बंदा it's या probably a full toss मैंने तो होता पता नहीं क्या-क्या साइंस सुनी थी, पता नहीं ज़ैन तुम्हें याद है या नहीं ये साइंस? आई डोंट नो किसने मुझे बताई थी ये बात, कि शेन वॉर्न के एक्शन में जो स्पिन ज़्यादा होती है ना, उसका रीज़न बताऊँ क्या था? कि वो जो आता है ना, लाइक उसका जो लेफ्ट हैंड होता है, क्योंकि हुँ, लेफ्ट हैंड पहले आता है और नीचे जाता है, फिर नीचे राइट हैंड आता ऊपर से आता है ना। हुँ, है. तो वो कहता था कि पता नहीं कहाँ से किसने मुझे बताया था ये, आई डोंट नो, इट्स सच अ वियर्ड मेमोरी मेरे दिमाग में, कि जो लेफ्ट हैंड आ रहा है नीचे,
इट एक्चुअली लाइक एक मिनी वैक्यूम सा एयर में क्रिएट कर देता था सामने से, और फिर बॉल वहां से जब गुजरती थी तो वो एक अजीब लाइक इट हैड सम काइंड ऑफ लाइक अ रिएक्शन टू इट वो कि क्या बॉल वहां वैक्यूम एक चॉपर एक हाथ गुजरता था पहले, और फिर वो उसके बस फिर तो वो वो कहता था कि क्योंकि वो गाइडेड पाथ जाती उसका थी। उसके लेफ्ट हैंड कप की तरह आता था नहीं, और यूं करके आता वो बीच था में से ऑलमोस्ट हवा लाइक, हटा देता था और फिर हाँ उसमें से बॉल एग्जैक्टली। जाती थी। और वो फिर उसमें पता नहीं मैंने कहा कि अजीब सा दिमाग में लोगों ने ना अपने मिथ्स बनाई हुई थी उसके एक्शन के या बारे में कि यार ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ये चीज़ें वो कर सकता है। जैसे मुझे शोएब अख्तर की याद है, ये तो मुझे याद है किसने बताया था, ये मुझे दानिश ने बताया था, रिमेंबर? क्या 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 दानिश ने बोल बताया था कि शोएब अख्तर उस ज़माने में 99 शो वाला शोएब अख्तर इतना वो पीक पे था कि दानिश ने मुझे बताया कि यार ये इतना डेंजरस बॉलर ना, इसको बैन करने वाला है ये वो, और ऑब्वियसली उसको शायद उसका एक्शन इशू चल रहे होंगे तो अभी बैन की कहानी चल रही होंगी। या बट उसने मुझे रीज़न बताऊँ क्या था, क्योंकि ये इलीगल बॉलिंग करता है, क्योंकि यू कांट बॉल बिटवीन द बैट्समैन एंड द विकेट, उसके बीच में जो गैप होता है ना उस पे ये मारता है। हैं? तो वो वहाँ पिच करती है बॉल, तो बेसिकली बैट्समैन तो खेल ही नहीं सकता, क्योंकि आप पहले यूजुअली होता था ना कि बैट्समैन के सामने बॉल आती है तो शॉट मारेगा, मिस होती है, बॉल वगैरह जो भी। तो इलीगल उसने रूल दिमाग में उसने बताया था कि एक क्रिकेट में रूल है कि आप बैट्समैन और विकेट के दरमियान या पिच नहीं कर सकते, और वो शोएब अख्तर ना वहीं पिच करता है वहीं पर, तभी उसको लोग खेल नहीं पाते, यॉर्कर पे आउट हो जाते हैं ये वो। मैं इलीगल कहा यार एरिया। अजीब या सी नहीं, बट उस जमाने में बड़ी अजीब अजीब सी हाँ, मिथ्स सब थी। अपना इंटरेस्टिंग अपना बिकॉज लाते। इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज इससे ये शो होता है, दिखता है कि when you are this good, या almost like पीपल विल। urban myths, they rise as you're playing just to या explain या how good you are, right? या And that it's a sign of greatness, really. With या Shane एब्सोल्युटली इट Wattier, इज। that vacuum creating right or left hand following, preceding the right as it balls, stuff like that. But अच्छा, हाउ कैन वी टॉक अबाउट हिम एंड नॉट टॉक अबाउट लाइक हम लोग 99 2000 की तक आ ही गए हैं, तो द फेमस बॉल ऑफ द सेंचुरी that जो was the उसको मिली getting थी, ball. Yeah, द या गेटिंग बॉल, राइट? आई थिंक वो फर्स्ट बॉल थी ना उसकी टेस्ट मैच में। it दैट्स was कॉल्ड द his. फर्स्ट बॉल ऑफ द सेंचुरी, राइट? It was दैट his वाज द बॉल first ऑफ द ball. I think it was his सेंचुरी। first ball of the Ashes. I think. Yes, it रियली? was the इट first वाज ball of his Ashes. That's true. That's true. So हिज Yeah, एशेस? yeah, yes, I think his ओह so. माय debut, गॉड, his रियली? Ashes debut, and that was the ball of the century. वाओ, आई डिडंट नो दैट, मुझे ये नहीं पता था, That मुझे was था कि crazy. उस एशेस में से बॉलिंग करी थी एंड देन ही बोल्ड हिम और वो बॉल ऑफ द सेंचुरी बन गई थी। Because his career mein to, I mean, before that he was he had a very bad start. I think first match mein usne apni Hmm. one for 150 दी थी, something like that. Yeah, So, but that was his first ball in the Ashes. इंडिया के साथ आई थिंक डेब्यू किया था उसने, Right, I think वॉर्न that's ने। yeah. all. वो yellow First match. कपड़ों. I guess that was the नहीं नहीं, kid. टेस्ट मैच की बात हो रहा हूँ। Test match में था वो. हाँ, बिग उसी 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 के साथ मिली हुई ओडीआई सीरीज होगी जिसमें तो बात कर रहे होगे, जो Hmm. येलो वाली जो थी। Yeah. तो हाँ, एब्सोल्युटली लाइक मुझे बॉल ऑफ द सेंचुरी का कॉन्सेप्ट उसकी वजह से पता लगा था कि कोई बॉल ऑफ द सेंचुरी, आई थिंक इट वाज़न्ट अ कॉन्सेप्ट अंटिल ही बोल्ड दैट बॉल, जिसमें फिर लोगों ने सोचना शुरू किया, ओह who else has bowled a great delivery like that, and Yeah. then they realized कि nobody else actually this is Hmm. the ball of the century then Yeah. in essence। And तब still is. जब से रिकॉर्ड होना शुरू हुई है लाइक लास्ट Yeah. सेंचुरी की बॉल, और अब तो इतनी यानी Although फनी चीज़ है। I think Wasim to Dravid was probably the हाँ, best लेकिन ball I've ever seen. that was Outside 90, pitching outside leg and taking in front of like just a tip टॉप of थ्री it. तो थी वो, Thought, टॉप yeah. थ्री तो That थी, that must टॉप be the थ्री। best I think I've आई थिंक seen. दैट स्पेल, वो जो मॉर्निंग स्पेल था टू ड्राविड वाज प्रोबब्ली One of I the think best. अनबिलीवेबल स्पेल like था। the apex of bowling I've seen. Like, Hmm. उससे उससे पहले वाली बॉल देखी थी तुमने देन? उसकी पहली वाली बॉल the लेजिटिमेटली instinct अंदर आई थी, जो 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 बीट उसको किया था। एलबीडब्ल्यू नहीं, जो एलबीडब्ल्यू था की वो अपील हुई थी। 100% LBW था, वो खा हाँ, गया. 100 एग्जैक्टली, And वो then he's अंपायर like, how ने। to bowl him because और फिर and लाइक उस पे तुम उसकी कमेंट्री चेक करना, रमीज राजा है और क्या कहते हैं, कौन है was it उसका Sidhu? इंडियन जो है? नो Yeah, नो, yeah, Shiva Ramakrishna. शिव रामकृष्णन। शास्त्री That शास्त्री okay. शास्त्री। अच्छा शास्त्री था। तो ये दोनों कमेंट्री कर रहे हैं एंड देर बोथ सो, ओह दैट्स बोल्ड लाइक व्हाट अ ग्रेट डिलीवरी फ्रॉम ये लाइक, इवन रमीज राजा के मुंह से एक्साइट, लाइक उस जमाने में पता नहीं टेम्पलेट कमेंट्री का डिफरेंट होता था, क्या होता था, एक्साइटमेंट ही नहीं निकल रही, लाइक मैं कह रहा हूँ डूड यू जस्ट वॉच लाइक अ फकिंग मैजिक डिलीवरी, But the same लाइक thing बॉल happened in the अंदर आ रही ball है of और the फिर यूं century. बाहर That निकल रही ball है। of it's the like century, Zahir one Abbas की people commentary, he's right? bowled. हाँ, And लाइक हाँ, ओह इज बोल्ड हिम, ओह इज गॉन, Hard और hand. मैंने कहा चलो ठीक है, उसका शास्त्री का बनता है कि वो थोड़ा सा
अंडर प्ले कर रहा है उसे, रमी जरा उससे कम आ रहा है अंडर प्ले, वो कह रहा है अच्छा तू अंडर प्ले करेगा, मैं तुझे बताता हूँ क्या, ये तो अभी देखिए वाइड अभी थी। मैं क्या करता हूँ। Like that's like a physics defying delivery almost ओ because गॉड, तुम Yeah. देखना उसको, लाइक वो रीप्ले भी आ रहा है ना, तो उनको उनको दिमाग नहीं खुल एक रहा कि अबे साले ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये I अंदर आ think रही है the बॉल only another thing he ball, gave और अचानक से us यूं आउट। similar was that Akram to Croft, which was Croft, every yeah, जो double swing, time exactly what so I was gonna say, जो double mind-boggling swing हुई थी। because खैर, तो बट I एनीवे लाइक Yeah. वो yeah, that's टॉप the थ्री तो point थी, लेकिन is शेन वॉर्न वाज प्रोबेबली द बेस्ट, क्योंकि वो एक वैसे इंटरेस्टिंगली दोनों एशेस लेवल कंपटीशन थे, इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया Yeah, and इंग्लैंड, लाइक Australia, दोनों ने yeah. टॉप लेवल पे बॉल करी, ये नहीं कि जिम्बाब्वे के साथ बॉलिंग करी थी उन्होंने, नहीं लाइक exactly. बॉल ऑफ द सेंचुरी। तो और वो सीरीज एक्चुअली आई थिंक पाकिस्तान इंडिया हिस्ट्री की बहुत बड़ी सीरीज थी वो, सीरीज जो थी। And 99 to वाली be थी। honest, Wasim bowled to like a really top-end world-class batsman, right? ओ या, So अवे with अवे फ्रॉम probably the होम। best defense of any player Yeah, Oh in the yes, Dravid, world. oh man, yes, yeah. oh yes, So easily, I like would मुझे give it over द्रविड़ की to शक्ल हो गई थी, द्रविड़ कहता है यार आई कांट लाइक ये तो किसी किताब में नहीं लिखा कि इसको कैसे Yeah. खेलेंगे। no one got to play it. Like Sachin को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो, no one कुछ No, has नहीं a कर that सकता, कोई नहीं कर was सकता था, लाइक But इतने going मजे back से to वो गई थी यार। Warne, I was actually saying this to Navid the other day that he's probably bowled the most unplayable deliveries, the most yeah, out ever. astonishing deliveries out of anyone I've seen. Right? Mm-hmm. Yeah, our rough से जाके leg stump hit करी. Yeah. That's Strauss dismissal. I think उस 2005 या 6 का. हाँ वो जो चल, Batting delivery श्राउस like को तो शायद उसको 2 मरतबा I ऐसे आउट think किया that है। was the best memory. yeah, Like I earliest memory, कह लो, the best memory was the whole Ashes series 2005 की. 2005 Even though and then England won, yeah, but Shane 2005 Warne वाला, was also on 40 a 40 different wicket. level He was in that series. यानी इट वाज शेन वॉर्न वर्सेस केविन पीटरसन 2005 Yeah, का। basically, yeah, yeah, yeah. yeah. And और then आई क्या in थिंक इंग्लैंड के 2006, साइड they पे, basically, I think they gave them a beating, right? Like 5-0 the हाँ next उसके yeah, game. बाद फौरन जब गए थे तो कुत्ते की तरह And मारा Warren was उन्होंने, ये the मुझे बहुत याद है। बहुत बहुत तबाही किया था बहुत उन्होंने, तबाही पता करी नहीं। थी मुझे याद, वो 2005 वाली सीरीज मुझे बहुत अच्छी तरह याद है इंग्लैंड में, वो क्योंकि the best दिस वाज best मैच्योर series. वॉर्न, दिस वाज लाइक मैच्योर वॉर्न, Yeah, और like सम at the माइट end of his आर्ग्यू, career, kind of 35, हाँ 34. yeah. राइट, Uh, उसके बाद भी कब तक खेला है, आई थिंक ही प्लेड 2007 में 2011 retire हो गया, I think. I think 7 हाँ, तक। Yeah, I he's think also retire. the first captain to win IPL. ओह Royal. या 2007 रॉयल्स, और मेरे ख्याल से दैट वाज देयर ओनली आईपीएल एज वेल, Yeah, Yeah, उसके yeah, बाद so से his वो Tanvir आईपीएल ही नहीं जीते। inspired Rajasthan Royals. Like this, सोहेल तनवीर इंस्पायर्ड एंड yeah. शेन He वॉर्न was the man इंस्पायर्ड of the राजस्थान। tournament. हाँ Tanvir हाँ, was लाइक अभी like भी बेस्ट फिगर्स जो पूरी, आती हैं बॉलिंग की, yeah. yeah. आईपीएल हिस्ट्री की, आईपीएल के तो 13 सीजन होगा, 14 उस सीजन जमाने में कितने ये हुए नहीं हैं, करता, I don't know if they still do it because मैं IPL देखता नहीं हूँ, मगर वो लीडिंग विकेट हैट वैट टेकर देते हैं, हाँ क्या, देते हैं हाँ, देते हैं, हैट का I अभी think भी वो है। Sohail देते हैं Tanvir was ना, wearing that for a long time because he was the leading Yeah, लॉन्ग wicket. टाइम। I remember that और was one of my सोहेल तनवीर memories. उसी जमाने में बर्स्ट ऑन टू द सीन हुआ था, scene, लाइक yep. Mm, 2007 के वर्ल्ड कप में, उसके जिसके बाद ये आईपीएल हुई है, उससे पहले हुई है, आई डोंट रिमेंबर कि आगे पीछे हुई yeah, थी, Yeah. लेकिन फॉर हिम टू प्ले अंडर शेन वॉर्न एंड yeah. विन दैट टाइटल, लाइक सोचो शेन वॉर्न ने जाते जाते भी एक अपकमिंग फॉर्म ऑफ Cricket द में he गेम achieved में, something, क्रिकेट में yeah, भी ही ऑल्सो लाइक स्टैम्प्ड हिज नेम कि भाई अब yeah. जरूरी नहीं है कि टेस्ट प्लेयर मुझे याद रखना या वनडे प्लेयर And he याद रखना, played लाइक good, even batting wise. Like even into उसके बाद 2005 भी एग्जीबिशन Ashes, मैचेस खेले उसने उसने यार, बैटिंग उसने भी अच्छी की थी। एंड हाँ हाँ बैटिंग आईपीएल अच्छी में की भी थी। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। मुझे याद है वो शाहिद अफरीदी को जो कूटा था उसने, शाहिद अफरीदी ने बड़ी मतलब पंगा लिया था इसके साथ, वॉर्न के साथ, हाँ मुझे उसी याद आ रहा है कुछ उसी ऐसा, वाले आईपीएल में, क्योंकि आईपीएल बस हाँ उसमें वो खेला था डकन के पाकिस्तानी साथ। में एक ही में खेला एक्चुअली या हाँ, दक्कन तो के उसने साथ, हाँ गाली वाली दे दक्कन, दी थी, शेन वॉर्न दक्कन की हट चार्जर्स। गई। शेन वॉर्न ने पता नहीं 3 छक्के मारे थे एक ही ओवर में शायद शायद अफरीदी को, और मैच नहीं नहीं, जिता दिया था ही उसने। वाज अ डिसेंट, ही वाज अभी मैं सोच रहा था कि अभी तुम्हें बैटिंग की बात करी तो Yeah. आई थिंक एक और चीज़ जो शेन वॉर्न के साथ एसोसिएट की जाती है, एंड इट्स अमेजिंग कि द हम्म, अमाउंट ऑफ थिंग्स वी आर लाइक थिंकिंग कि उससे क्या क्या चीज़ एसोसिएट की, इज दैट फेमस 99 जो उसका स्कोर है, आई थिंक ही नेवर स्कोर 100 इन never scored an no, टेस्ट, राइट? international century. I no. think yep. और वो 99 जिसका एक बड़ा फेमस बन चुका है कि वो 99 पे आउट हो हम्म, गया था, आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड और समथिंग। is और मैं I सोच रहा think था कि आयरनी ऑफ आयरनी जैन, तुम्हें पता क्या है, जो हमारा पर्सनल फर्स्ट क्रिकेट गेम था या फेवरेट क्रिकेट गेम था, वो कौन सा था? 99. चेन 199। Hmm. That's true. और मैं That's कहा true. यार उन्होंने क्या डिड दे थिंक अबाउट दिस, लाइक आई थिंक वो 99 बाद में हुआ था, बट सच अ वियर्ड कि उसके नाम Yeah. का जो गेम है, क्योंकि उसके बाद शेन 99 वन नहीं है 2000 नहीं आया, उसके बाद शेन वन 2001 नहीं आया, आई थिंक इट वाज शेन वन 99 एंड देन शेन वन PlayStation 1 पे shout out really good game. Yeah. हाँ
प्ले Yeah. स्टेशन पे बहुत ज़बरदस्त गेम था। लाइक मैं अभी उसकी वीडियो भी देख रहा था, ऐसे यूट्यूब पे किसी ने डाली थी, तो इट वाज़ एक्चुअली वेरी गुड। लाइक अभी भी उसको देखा जाए तो उसके The शॉट्स mechanics of playability was really good, really good. Actually वेरी गुड। look better than the games that are out Yeah, later on. और वो भी You know, कोड मास्टर्स ही था, हाँ, आई थिंक कोड कोड मास्टर्स मास्टर्स का। था, Codemasters. कोड मास्टर्स का कोड वो भी मास्टर्स पीक हाँ। था बेसिकली, विद ब्रायन लारा के भी बहुत बेहतरीन ब्रायन गेम है। लारा के भी अच्छे गेम्स आए थे और शेन वॉर्न का आया था। Yeah. तो वो मुझे याद आया। और दूसरी चीज़ ये है कि स्पीकिंग ऑफ 99, 2 years ago, 3 years ago, when Pakistan was in Australia, Hmm. remember that famous Yasir Shah 100? It's the most improbable thing of all time. तो But यासिर शाह जब 99 में था, उसको बोला होगा दांत दिखाई जा यासिर रहा शाह यासिर शाह जब 99 पे था, है। तो guess who was on the in the commentary box? Shane Warne. Shane Warne, Shane Warne. Shane Warne, and I remember seeing that game कि जिसमें वो literally he was like for that 5 minutes or so, या जो पीरियड था 90s में जब यासिर शाह खेला था, he Hmm. was a पक्का पाकिस्तानी सपोर्टर। उसने बोला I don't care, I want to see this guy score 100, क्योंकि लेग स्पिनर, एक तो नंबर वन लेग Legspin, स्पिनर था, yeah. और प्लस फिर वो उसकी दिमाग में अपनी मेमोरी थी कि यार ये बंदा वो 99 मेंटर प्रॉब्लम है। भी रहा है ना यासिर का, तो हाँ, उसके उसका साथ उसका हाँ। बिल्कुल yeah. क्लोज रहे हैं दोनों ने साथ, यानी कि उसने आई थिंक दुबई में या कहीं पर आया था तो दोनों ने साथ बॉलिंग भी की थी। एंड देन Yeah. दैट्स व्हाट्स सो ग्रेट अबाउट हिम, लाइक आई हैव सीन हिम गिव टिप्स टू हिम। Hmm. राशिद खान जो अभी Rashid लाइक Khan. आई थिंक वेरी गुड, आई थिंक राशिद खान probably the best leg spinner in He's the one. world right now। Yes, right now, agreed. He हाँ, actually अभी हम लोग is. सोच रहे थे ना कौन है लाइक लेग कौन है? स्पिनर का किंग इस He वक्त, तो हाँ, is. he's Yeah. definitely yes हाँ। Yeah. तो तो वो उसने उसके साथ भी बॉलिंग करी है। एंड देन आई थिंक आई रिमेंबर कोई पाकिस्तानी बच्चा था जिसकी वीडियो आई थी इंस्टाग्राम पे, बॉलिंग करा लेग स्पिन, उसके पास Hmm. वो वीडियो पहुंच गई, एंड देन ही आल्सो लाइक उसको भी I think टिप्स that मिल। was Indian. हाँ, कोई बंदा था, कोई बच्चा था, हाँ, छोटा वो जो बच्चा लेग ना, वो स्पिन जो लेग गली में Was जो like गली running it कर रहा sideways. था। छत Yeah, के ऊपर मारा था, छत के Yeah. ऊपर बच्चों के साथ जो हाँ। करा था। तो उसके बाद वो वीडियो पहुंची था। ही जेन्युइनली फेल्ट फॉर द आर्ट फॉर्म। तो 99 की बात कर रहा था मैं। यासिर शाह ने जब 99 में ना, पता नहीं फॉर सम रीजन स्टुपिडिटी, उसने आके ही केम डाउन द ग्राउंड और Hmm. तारा बना, Hmm. और ऐसा तारा बना कि मिड ऑफ तक गया था बस वो। और लिटरली वो फील्डर था ना उसके, बस वो इंचेस से रह गया कि वो उसको पकड़ लेता उसको, और वो जाके फिर मिड ऑन के ऊपर से जाएगा, देन ही स्कैम्पर्ड फॉर अ रन। तो उस पे शेन वॉर्न इतना नहीं हंस रहा था उस पे, मुझे याद है उस कमेंट्री पे कि यार ये भी अब फॉरन, ये भी 99 पे जाता अभी, और मैं कमेंट्री बैठा था और सब लोग उसको बोल रहे थे कि तू उसका मनूसत बनेगा, ये 99 पे आउट हुआ Yeah. था। एक तो ऑस्ट्रेलियंस का बैंटर भी Actually, आपस में really कमेंट्री good बॉक्स में भी बैंटर लेवल होता होता है, था। वो उसकी जबरदस्त होता commentary है वो। बहुत अच्छी लगती थी actually. He's really good analyzing, especially spin bowling. ओह, ही वाज एक्सेप्शनल। लाइक एनालिसिस पे तो मैं बात ही नहीं करी है। लाइक अभी रिसेंटली जो एशेस हुई थी जिसमें वो कमेंट्री कर रहा था, बहुत सारे क्लिप्स ऐसे आए थे, हिम एंड रिकी पॉन्टिंग, हम्म। जिसमें वो बता रहा था कि दिस इज द प्रॉब्लम, एंड देन वो अचानक से वही चीज़ होती थी, और जो Ricky स्ट्रैटेजी वो Ponting लोग रीड कर actually रहे थे। again another great one. हाँ, But लाइक स्ट्रेटेजिकली रिकी पॉन्टिंग आई थिंक प्रोबेबली बेटर देन स्टीव वॉ। और I think just so, right? analyzing, right? Yeah, it's हाँ, लाइक ही fantastic. वाज जिस लेवल पे वो लेके गया था गेम को, ऑस्ट्रेलियन टीम हम्म। को, उसके बाद ही न्यू इन लाइक वो जिस तरह से कमेंट्री करता है ना, या कोचिंग भी करता है, आई थिंक आईपीएल में वो भी कोचिंग करता है फॉर सम हम्म। टीम। तो लाइक मुंबई, I think उसकी Mumbai is, yeah, Yeah, मे बी, हाँ, but I mean, लेकिन going एनालिटिकली back to वेरी very good, yeah. going back to शेन Warne, I वॉर्न का think भी वो क्लिप if देखी है he, where वो एक फ्रेंडली सीरीज नहीं होती थी, so he was bowling against Brendan McCullum and हाँ, he हाँ, had मैं the, भी उस पे आने वाला, मैं उस पे yeah, आने he वाला had था, the वो mic माइक पे आने I वाला in था। his, remember that. अबे he's यार, like, अच्छा, दिस इज आफ्टर अ फ्यू इयर्स ही इज रिटायर्ड, ये नहीं कि Yeah, it फ्रेश was रिटायर्ड। like no, one no, of no, those exhibition. एग्जीबिशन में एग्जीबिशन exhibition गेम था, match था, आई थिंक yeah. ऑस्ट्रेलिया में आग वाग लगी थी, उसका कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। हाँ, को कुछ रिलीफ था का था। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का रिलीफ का गेम था, तेरे को हाँ। हम्म। तो क्या कहते हैं, उसमें यही हो रहा था, तो मुझे बता रहे थे कि उसके माइक लगा हुआ था, और ही वाज वन ऑफ द पीपल दैट हैड द माइक। तो Yeah, वो उससे पूछ रहे थे कि तुम किस तरह से बॉल करोगे मैककलम को, yeah, और वो he उसको said, बता रहा था, आई थिंक कि वो स्वीपिंग मैककलम ऐसे कुछ हो रहा था, मैककलम वाज जो है ना स्वीप कर रहा था बार बार उसे। बोलता तो I'm उसने gonna बोला कि मैं पहले उसने place बोला one. कि मैं चौका खाऊंगा, पहले ये कराऊंगा, पहले वो कराऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर उसने बोलूंगा कि अब इस बॉल पे मैं उसको निकालूंगा। आई Yeah. थिंक उसने एक और इस तरह की चीज़ उस पर करी थी जब वो डाउन द ग्राउंड को आया था, एंड ही स्टम्प्ड द हम्म। गाय। हम्म। आई डोंट रिमेंबर हु, लाइक इस तरह की दो तीन मरतबा इसने किया था कि इसने बोला था कि अब ये गया, अब ये गया एंड है। देन ही एक्चुअली जाता था नेक्स्ट बॉल पे। Yeah, आई yeah. थिंक उसी I think it सीरीज was a में, straight one from right I recall. हाँ, Did he उसी get it? सीरीज में मैकग्रा ने भी किया था यही चीज। I think McGrath did. हाँ, मैकग्रा मैगरा वाज ने किया था ये। बॉलिंग टू वार्नर Well, yes, and he was exactly. like, हाँ, अब पीक इस बॉल वार्नर। पे ये जाएगा, I'm gonna take this one out and he's gonna edge it and he did हाँ, exactly that. एग्जैक्टली यार, सोचो यार वो लेजेंड्स, कसम से यार उन लोगों के Yeah. दिमाग कैसे होते थे। और Yeah, yeah. But I mean, सेम चीज़ अब हम जब से मैगरा बोल दिया, तो वसीम के बारे में भी मशहूर है ना, जो ये हम्म। ब्रेटली ने एक वाकया बताया था। Yeah. वो
सुना तुम लोगों ने ब्रेटली ने जो एक वाक्य बताया था? ब्रेटली बेसिकली बता रहा था कि ब्रेटली यूज्ड टू प्ले फॉर आईपीएल, कौन सी टीम है शाहरुख खान की? नाइट राइडर्स, कोलकाता। कोलकाता। कोलकाता ना। तो वो उसका कि वसीम अकरम रह चुका कोच। तो वो बता रहा था कि हम लोग बॉल कर रहे थे नेट्स में, आई वाज बॉलिंग टू जाक कालिस। हम्म। तो कह रहा है जाक कालिस टक टक करके शॉट्स मारा मुझे, टक 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 टक। अब वसीम अकरम वहाँ पर खड़ा हुआ था और ब्रेटली को आके बोलता है कि यार तुम उसको ऐसे कराओ ना, ये वो उसको बता रहा था कि भाई तुम उसको बाहर निकालो यहाँ से, पहले यूनिक को स्ट्रेट को फिर बाहर निकालो। अब ब्रेटली ने कहा कि अब यार अब मुझसे नहीं हो, तुम करके दिखाओ मुझे। हम्म। तो उसने वो चप्पलें पहना हुआ था वसीम अकरम, उसने बोला ही वाज वेयरिंग स्लिपर्स उसने। और दिस इज लाइक वसीम अकरम रिटायर भी हुए हुए 10 साल हो गए, समथिंग लाइक या। दैट। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो वो बॉलिंग कराई उसने, अंदर दो तीन बॉलें अंदर लेकर आई उसको, और उसको जाक कैलिस ने डिफेंड किया आराम से। डिफेंड तो किया। जाक कैलिस डिफेंस उसका बड़ा लाइक पीक डिफेंस था या। उसका। फिर उसने आके ब्रेटली को बोला कि अच्छा अब मैंने उसको बता दिया है कि लाइक बॉल इस तरफ आ रही है, अब नाउ इट्स गोना गो अवे एंड ही इज गोना एज इट। हम्म। और एग्जैक्टली वैसे ही कम्स फॉरवर्ड, टक निक फर्स्ट स्लिप उसके अंदर, नेट्स के अंदर ना। नेट्स का या। तो ब्रेटली रिमेंबर्स, बेसिकली ब्रेटली बता रहा होता है, डिस्क्राइब करते हुए कह रहा है यार वी वर ऑल लाइक बाउ डाउन टू द किंग, लाइक कह रहे यार ये बंदा लाइक हाउ इज ही डूइंग दिस लाइक। और तभी मैं समझता हूँ कभी यार कि वसीम अकरम या मे बी नॉट शेन वॉर्न बट वसीम अकरम टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो हम्म। जीनियस होते हैं, नेचुरल जीनियस होते हैं, उनको कोच बनना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज फॉर देम इट कम्स Because नेचुरली you एंड देन expect that दे गेट, level. या। या। I think बिकॉज the दे, same argument was made for Maradona because he was such a bad coach because of that. Because या। he हाँ naturally बिकॉज वो कहता है कि साले यूं निकल जाना साइड से, मैं कैसे हाँ। निकलता हूँ, तू कर ले आके। so I think that point does hold merit. Magar, हम्म। लेकिन I mean, शेन compared वॉर्न to के लिए Steve नहीं, आई Warne, थिंक शेन वॉर्न प्रॉब्ली, क्योंकि वो आर्ट उसने सीखा था, ही डिडंट लाइक नेचुरल टैलेंट तो था ही या। वो, but he was लेकिन a ही स्पेंट wizard, bro. आवर्स एंड आवर्स। He and same for I think same for anyone who is a master of their craft. हम्म। They spent like uncounted, or invisible amount of time. हाँ And हाँ Shane Warne, the thing with him was that generation of Australian cricketers was just so outstandingly like better than anyone else, and he was not probably he's their best player. Uh, ओ या एंड देन to the फॉर हिम extent टू that होल्ड, was the replacement, the Stuart McGill would have been number हम्म। one leg spinner in any other side या। if it ओ wasn't या for वो तो Warne. उसका मसला He ये was था that कि good. उसी टाइम पे आया है when Warne was there too, so he could He's not actually very, very good. make it He couldn't हाँ, spin. He could spin it basically as much as Warren, as bro. much. Yeah. यप यप। Weirdly enough, I think there was a story about him last year. He was kidnapped or something. Anyways, कौन? uh, Stuart मिगिल? McGill. It's like one of the weirdest story ever. Yeah, he got kidnapped. You He got sent it to kidnapped in me. Australia, फिर This दोबारा is फिर उसको छुड़वा दिया or something. It yeah. was Zain sent me the link. He's like he got yeah. kidnapped. I'm like that's so random, like a random Stuart McGill. He got kidnapped in Australia. Yep. Apparently, some पता personal नहीं बंदा identity. खत्म उसका छोड़ छुड़ाव तो हो गया था. It's fine at the end, but बट so bizarre turn. अच्छा शेन वॉर्न का एक और चीज़ याद आती है जो ने जो आई थिंक बीबीएल भी उसने, ही प्लेड खेला। बीबीएल एज वेल, इनिशियल एडिशंस ऑफ बीबीएल के, जिसमें खड्डा उसका हुआ था ना फेमस उसका। पड्डा जो मार्लन सैमुअल वाला। हाँ। अब मार्लन सैमुअल और इसका ना दोनों का लाइक पर्सनल लेवल पे जा चुके हैं लोग, थे हम्म। हम्म। आई थिंक अभी कुछ हर से पहले या साल पहले, साल 2 साल पहले मार्लन सैमुअल बर्स्ट आउट, जिसमें वो उसके बाद लाइक ही सेड अ बंच ऑफ रेसिस्ट स्टफ Yeah. अगेंस्ट वॉर्न हम्म। के, Marlon पता नहीं Samuels? वो फ्रस्ट, हाँ हाँ, जो वेस्ट इंडियन प्लेयर था। Yeah, yeah, I remember him. बड़ा तो गंदा जिसने फटा वर्ल्ड हुआ था कप उन्होंने। बहुत गंदा फटा हुआ था, तो लाइक बैट शर्ट बैट वर्ट मारने पकड़ ली पे आ थी गया था। शर्ट पकड़ ली सीरियसली। थी उसकी। शेन वॉर्न, and this is Shane Warne BBL वाला, I think he's has retired by that time and he हाँ। was just like inaugurating the BBL first, I think BBL थी something like that। या। या। तो अगेन वाला नहीं था कि अभी मिडल ऑफ द लाइक अभी जाके एक ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलेगा, वो हट चुका क्लोज था टू ऑस्ट्रेलिया टीम से। रिटायर। या। हाँ ही वाज डन, आई थिंक आईपीएल के अराउंड ही था वो, फर्स्ट आईपीएल के हम्म। अराउंड। हम्म। तो um, और अभी मैं देख रहा था कि लोग वेट कर रहे हैं कि फॉर मार्टिन सैमुअल्स टू एटलीस्ट Apologize or एक something. Say something. अपोलोजाइज नहीं है, ये नहीं कि बंदा कह रहा है चलो मर गया तो हाँ। बंदा लाइक लेट बायकॉन्स बी बायकॉन्स, एंड आई डोंट या। थिंक ही हैज So डन दैट did येट। he come out and say anything? नो, No, लाइक I आई don't. थिंक कि लोग तो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कर रहे हैं कि लाइक वो कोई अजीब से लाइक सेलिब्रेटरी मूड में चल रहा है, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट वियर्ड थिंग। I don't know. Maybe तो people are looking. वो तो वैसे He was संकी वो always संकी, he was always a little weird. Like हाँ वो संकी था, हाँ वो कुछ संकी, off था उसके बारे में। हाँ वो संकी था, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचता भी नहीं कोई। Yeah. तो अच्छा शेन वॉर्न, फाइनली आई थिंक एक बड़ा एस्पेक्ट ऑफ शेन वॉर्न दैट वी आर फॉरगेटिंग and we didn't bring up is his amazing rivalry with Murli Murli. Oh yes. towards the end of this.
career जिसमें दोनों Career. like they were going back to back कि कभी ये wicket ज़्यादा लेता था where he was the Hmm. highest wicket taker in the world and then he became the highest wicket taker in the world until eventually Murli played longer to Uh, like pick up 800 wickets. लेकिन at one point I think 3-4 साल तक these guys were like कभी neck एक to विकेट neck. ज़्यादा लेके yeah. highest neck and neck चल रहा था, कभी Hmm. highest wicket taker वो बन जाता था, कभी highest wicket Hmm. taker ये बन जाता था. It's like watching a mirrored image of the same, like जितनी वो स्पिन करते थे वो साला लेग स्पिन में इतनी करता था, वो ऑफ स्पिन में उतनी ही करता था. हाँ So exactly बिल्कुल. basically, yeah, they were both like amazing. Murli बट भी आई was, थिंक मुरली की जीनियस के बारे में ज़्यादा स्पीक लाइक उसकी स्किल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आई हाँ, डोंट थिंक एनीबडी पर्टिकुलरली स्पीक्स अबाउट हिज I think जीनियस. people don't. I think it's iska jo ye aspect is more tarnished because of that the action checking allegations. हाँ, Obviously, that बार-बार जो, stayed with him, बट देन which आई थिंक ही वाज फाइन लाइक फॉर द मोस्ट ऑफ हिज करियर. वो शुरू शुरू में बहुत हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. didn't he like आई actually थिंक wear like a cast to demonstrate he could bowl हाँ yeah, हाँ, his नहीं वो बेसिकली उन्होंने रूल जो बना तो cheating. 15 डिग्री का 15 डिग्री बनाया था उन्होंने रूल कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ये आपका आर्म जो है वो हम्म, अगर क्या कहते हैं इससे पावर नहीं जा रही है अगर, यानी कि आप बॉल की स्ट्रेंथ आपकी जो समझ लो कि हम्म, बॉल कराने की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो आपकी इससे आ रही है, एल्बो से, फोर आर्म, हाँ एल्बो से एल्बो तक आ रही है अगर आपकी, देन इट्स फाइन नो मैटर हाउ मच यू लाइक डिग्रीज जो आप जो कर रहे हो, क्योंकि अगर आप यूं कर रहे हो ना तो इट मीन आप यहाँ से आप एनर्जी मार रहे हो, हम्म, तो दैट बिकेम एन इशू. अभी जैसे कि हसनैन मोहम्मद हसनैन का जो रोका था, जो अभी या, एक्शन में इशू आया उसका, तो उसमें यही डिस्कस कर रहे थे कि वो जब बॉल कराते हैं ना तो वो जब व्हेन ही इज अबाउट टू डिलीवर तो उसकी एनर्जी या उसकी जो बेंडिंग आती है वो इधर से आ रही होती है, तो इट मीन्स कि वो जान यहाँ से मार रहा है, तो दिस बिकम्स इरेलीवेंट, दिस बिकम्स कि अच्छा जो भी है. लेकिन आई थिंक दिस दे मेड दिस रूल फॉर मुरली टू एग्जिस्ट Yeah, एसेंशली, हम्म, क्योंकि विजिबली ऑब्वियसली ही वाज लाइक 15 डिग्रीज अबव व्हाटएवर जो भी था, जो कि मैं समझता हूँ इट्स बुलशिट. आई थिंक एटलीस्ट स्पिनर्स को यार अगर 50 अब जैसे 15 डिग्रीज पे कितना प्रॉब्लम शुरू हुआ है, या, ऑफ स्पिनर्स ही दुनिया से गायब हो गए. या, लाइक कोई दूसरा नहीं कराता, अजमल लाइक अजमल वर्ल्ड खत्म हो क्लास, गया. या, अजमल लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल पे बंदा चला गया था, लाइक ही वाज but सोचो एट who वन would पॉइंट. you rate higher though? All in. यार That's the मैं वही बात immutable. मैं तुमसे मैं वही बात करता, मे बी इट्स इमोशनल राइट नाउ, बट आई थिंक आई रेट शेन वॉर्न हायर बिकॉज एंड दिस इज probably has something to do with the fact that Pakistanis generally played Murli well. या, Like I don't remember being I tormented think by they Murli. did, yes, but नहीं तुम्हें याद नहीं generally, जैन के like generally like I think Mohammad Yusuf when he started playing he अभी played him well. इवन हम लोग उसके overs निकाल देते हैं, हम सईद उसके ओवर अनवर निकाल के देते टाइम पे भी सईद अनवर प्लेड मुरली वेरी वेल. हैं. इंजी played या, him really well, यूनुस खान played him really well, हम उसको निकाल देते उसके ओवर, यानी कि अगर ओडीआई चल रहा है तो 30 रन दे के उसके और हाँ, एक भी आउट नहीं किया हम लोग भी निकाल देते थे उसको. ऑस्ट्रेलिया में तो uh, फटी पड़ी होती थी ना हमारी, शुरू में मैकग्रा आ रहा है उसके बाद शेन वॉर्न आ रहा तो है. किसी से खेला ही नहीं जाता था सबसे, like that was the most the worst out of the bunch for Pakistan. किसी से या, मैगरा खेला ही नहीं गया, I don't think नहीं ever. सईद अनवर तो, हाँ Especially Zaid Anwar, वो तो खैर yeah, like he was my favorite batsman of the night. he was like Zaid a Anwar bunny. was my favorite batsman. जहाँ मैकग्रा आता था मेरी हालत टाइम वाले ये गया, ये तो Like लेकर जाएगा Zaid जी. Anwar almost forgot to bat sometimes when Yeah. McGraw was bowling. उसका जो especially that corridor था ना outside the off Outside stump, off. हाँ so edgy. But just to talk further about the Murli versus Shane argument, I think the reason why there might be a disparity, I mean, I think Murli ka average was like 22, 23 versus Warren's 25. Hmm. But I haven't really looked at the statistics, but my hunch is that Murli played or had, a far greater amount of his wickets on the subcontinent, which was Hmm. historically been way more friendly for spinners, right? Yeah. हम्म Versus Warren played on Australian, yeah, English pitches, जो कि ज़्यादा English seam pitches. friendly. Hmm. And to be the guy on those pitches Yeah. is which is the same argument I use for Wasim Akram being better than McGrath, because Wasim Akram played most of his wickets, played most of his cricket on acid subcontinent pitches, जो spin हाँ Hmm. where else someone like McGrath or by extension someone who was playing in the West Indies like Ambrose Hmm. or Walsh, they played on pitches that were more designed towards fast bowling. Yeah. So that is my argument when I evaluate both of them, but it's very close. So. इट्स Hmm. वेरी क्लोज. अच्छा मुझे एक मैं जो बात कर रहा था मैं ये कह रहा था कि इमेज भी है, शेन Yeah. वॉर्न की इमेज हैज ऑलवेज बिन लाइक दिस शातिर जीनियस गाय, Yeah. लाइक ही इज प्लानिंग हिज बॉल्स. अभी मैं उसको स्काई स्पोर्ट्स का एक वो देख रहा था,
जो नहीं होता मास्टर क्लास टाइप का स्काई Hmm. स्पोर्ट में, जिसमें वो आई थिंक नासिर हुसैन को बॉलिंग करा रहा था किसको। तो Yeah. वो द वे ही वाज डिस्क्राइबिंग, वो कहता है यार पहला काम नहीं करूंगा, मैं अपनी स्टॉक बॉल वो देखूंगा कि मेरी स्टॉक बॉल कौन सी है। तो Hmm. एक दो बॉल लाइक सच अ मेथड उसने Yeah. दिमाग में रखा था कि पहले मैं स्टॉक बॉल रिकग्नाइज करूंगा। तो उसने बोला स्टॉक बॉल क्या होती है सर? स्टॉक बॉल वो बॉल होगी जो कि मुझे विदाउट एनी एफर्ट कर मैं मुझे करनी हो, यानी कि जो मैं पांच Yeah. बॉलों में से, सॉरी 6 बॉलों में से 5 बॉलें जो मैं करूँगा, स्टॉक बॉल होती है नॉर्मल, Yeah. नॉर्मल जॉब की स्पिन होती है, लेग स्पिन। लेकिन उसको भी उसने डिटर्मिन करने के लिए नॉट जस्ट कि उसने बॉल फेंकी, उसने बोला अच्छा ये मेरी स्टॉक बॉल, बोला नहीं अच्छा इस पे पिच पे बाउंस ज़्यादा हो रहा है Hmm. और पेस में कितना रखूंगा उसमें, लाइक सो मेनी कंसिडर सो मेनी Yep. थिंग्स गोइंग इन So हिज many हेड। variants, right? Yeah. आई थिंक वो वो हर सोच बॉल रहा है, सोच के करता था, नॉट वो हर अरे बॉल में भाई। उसकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होती थी. और फिर उसने एक बड़ा खूबसूरत फ्रेज बोला जिसमें वो पूछा था कि उसका मीनिंग क्या है। उसने बोला कि बॉल डिफेंसिवली टू एन Hmm. अटैकिंग फील्ड। तो उसने पूछा स्काई स्पोर्ट के बंदे ने कि व्हाट डज दैट मीन दो, वो बॉल डिफेंसिवली टू एन अटैकिंग फील्ड। तो उसने बोला डिफेंसिवली का मतलब ये है कि जब नया बैट्समैन आएगा तो I'm gonna बॉल डिफेंसिवली टू हिम टू एन अटैकिंग फील्ड। अटैकिंग फील्ड मतलब कि स्लिप्स और ये सारे Up बंदे close अराउंड on करके them. क्लोज बंदे खड़े कर दिए। Hmm. डिफेंसिवली का मतलब ये नहीं है कि आप कोई उसको वाइडे कराओगे या ये, डिफेंसिव मतलब है कि मैं उसको ज़्यादा स्टॉक बॉलें कराऊंगा अपनी। आई Hmm. वॉन्ट हिम टू प्ले मी। और मैं उसको कोई आई वोंट ट्राई एनीथिंग लाइक अब आ गया तो मैं उसको रॉन्ग वन करा दूँ, गुगली करा दूँ, फ्लिपर मार दूँ उसको, नहीं क्यों, मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। आई एम जस्ट गोना मेक हिम प्ले माय स्टॉक डिलीवरीज फर्स्ट। 2 ओवर तक 3 ओवर तक मैं स्टॉक डिलीवरी कराऊंगा ताकि वो मेरे साथ चिपका रहे, Hmm. ताकि मैं उसके आर्मर में जो चिंक्स हैं वो मैं देखता रहूँ। अच्छा ये डिफेंड कर रहा है तो उसका गैप आ रहा है नहीं आ रहा, Yeah. या ये फ्रंट फुट पे ज़्यादा अच्छा है, बैक फुट पे ज़्यादा अच्छा है, ये Hmm. कह रहे द मोर ही प्लेज मी द मोर आई नो कि अच्छा इसको मुझे कैसे आउट करना है। किस देन तरह वो out कहता है करना मैं 2 ओवर के बाद फिर मैं वेरिएशंस डालना शुरू करता था उसको, है? कि अब Hmm. मैं फ्लिपर मार दूँ, अब मैं उसको ये कर दूँ वो कर दूँ, सेटअप करके जो फ्लिपर मारता था वो, Yeah. इट वाज लेजेंडरी। अ लॉट मे बी मैंने शायद पर्सनली मुरली को इतना स्टडी नहीं किया जितना वर्ल्ड ने शेन वॉर्न को स्टडी किया है, बट नेवर समथिंग लाइक दिस केम अक्रॉस फ्रॉम मुरली साइड कि मुरली थोड़ा सा जी लाइक आई एम प्रीटी श्योर वो लाइक ही डिडंट पिक Yeah. 800 विकेट्स He फॉर made 100 रैंडमली। wickets. Of course, he was Hmm. like Hmm. a rare, a genius level talent. एब्सोल्युटली हाँ, लेकिन वो शेन वॉर्न के बारे में आई थिंक क्योंकि लेग स्पिन एज अ आर्ट इज इज मच मोर इंड्यूसिव टू बीइंग स्मैश्ड ऑल ओवर द पार्क, Yeah. Yeah, आई Yeah. there's a सच a vulnerability Tendulkar, in lighting the ball up and you No, have to वही है fight ना the कि ball, there's no two ways about it, like bowl you it have in to that fight the ball. part, right? Because कहते हैं ना कि the only bowling action जिसमें you're not leaving the ball in front of your eyes. Fast में you're हाँ, leaving it here, off में you're leaving it here, leg पे you don't even see where you're leaving it. oh yes, इतना स्लो, Yeah. that's why इतना it's आपको so फ्लाइट नहीं Yeah. कर dangerous. सकता। So it's that's why it's like one of the toughest art form. एग्जैक्टली तो मुझे इसलिए वो ज़्यादा वो लगता है कि उस पे 700 विकेट लेना टेस्ट के अंदर, इट्स It's a huge रिमार्केबल, deal. रिडिकुलसली वो। Yeah, and और you're bowling most of your time you're bowling on like fast seaming and Mhm. swinging pitches. It's not really designed to your Yeah. strength. So And to yeah, both of their credits, really, Muldy and Warne, I think they were both very respectful to each other, even within the Mhm. middle of when they were competing. yeah, Competing, yeah. के 700 विकेट जब उसके हुए पहले, आई थिंक पहले 700 विकेट वार्न के हुए थे, फिर मुरली बाद में Caught up to it. caught up to him. yeah. But they were generally very respectful to the, even in the middle of this like back and forth, इसमें एक ज़्यादा Hmm. विकेट वो ले रहा था, कभी वो ले रहा था। It was like an international version of वसीम अकार। Yeah. Yeah. होता ना Yeah. कि Yeah. हम लोग तो वसीम अकार टाइप के उस कंपटीशन को लाइक एक ही साइड के थ्रू देख रहे थे कि बंदा कहता अच्छा, अच्छा तूने पहले 5 विकेट लिए हैं पहली इनिंग में, अब मैं लेके जाऊंगा तुझे। उस जमाने के जो कंपटीशन था ना, वसीम अख्तर तो चलो एक ही टीम से है, हाँ जो शेन हाँ, वॉर्न और मुरली का था उस जमाने में तेंदुलकर एंड अनवर का था, बिकॉज दे वर कंपीटिंग ऑन द हाईएस्ट सेंचुरीज। राइट There राइट, were. एंड 17, अनवर एट 18, दैट 18, टाइम। 19, 19, हाँ 20 इस तरह चल रहा था दोनों, एक वो मारता था तो एक, और तो फिर हुआ ये था कि सईद अनवर की जो डॉटर जो थी वो उसका इंतकाल हो गया, तो ही टुक लाइक 1 year break, and that 1 year was that series when Tendulkar was on a different form, and he went हाँ from Okay. 19 to Massive 29 or difference. something within that one 30 year and a हाँ half, and he took the lead. And Saeed Anwar of course came back a little later, मगर वो एक वो rivalry भी साथ साथ चलती थी where Warne and Morley had their thing. एग्जैक्टली। अब Yeah. जिस तरह के अब जैसे जो चल रही है विद इन द टॉप 4 जिसको कहते हैं स्मिथ, Smith, विराट, Root. विलियमसन रूट, और अब Up to बाबर भी five उसमें है, डाल we, दिया। we have to include Babar हाँ, in there too, you right? have So to, Now you I have to. think, I think you don't have any argument not to. yeah. हाँ, But I think for yeah, some big even, loss. I mean, I think there's so much for him to still contribute. So, especially Hmm. from the commentary box.
Mhm. Like I said earlier, he was almost as good as a player as he was as an analyst, right? So it was, yeah, it's a big loss. I mean, it's harder to process these things when they happen so suddenly, right? I mean, Certainly, yeah, that's true. if he was like 75, it's easier to sort of say, okay, yeah, Understand. समझ आता है, yeah, yeah, exactly. yeah, it's Who do you guys think played Warne the best? such I an think I I think have problem. one. Sachin, definitely I Sachin. I think think Brian Sachin was Lara probably. high, but Brian Lara overall I played thought it was Morley the Lara. best. Brian Lara played Lara, Morley the best because he just like yeah, उसको भी remember बहुत a मारता series था. in 2001, Sri Lanka versus India. हाँ, Sorry, no, Sri Lanka versus West Indies. West Indies. And West Indies got absolutely hammered, right? 3-0, I think, at Hmm. away. But Brian Lara was basically, I mean, this was like 90s, West Indies 90s in a nutshell. Hmm. Brian Lara being a genius that he is, but they're losing every game. Yeah. And Brian Lara was like, I think struck a century in basically every test match, and he was Wow. like one of those people, जो 165 not out, and those Hmm. ढाई सौ की पूरी टीम गिर गई versus 500 that Sri Lanka made. But Yeah. and that was when Murli was at the peak of his powers essentially. Yep. Right. Yep. And I remember it, and I remember even Murli saying that no one played him better than that. Oh yeah, And yeah. he was basically sweeping him at every possible opportunity. That was Yep. his sort of, and टर्न he ही करने का मौका नहीं देता था उसको. Hmm. टर्न हाँ ही करने उसने का मौका. सही का निकाल लिया था कि I मुझे think sweep करना है. Larabi is one of those players that I've never seen get out stumped. जब वो नीचे निकलता था तो वो छक्का ही जाता था. Like Inzamam, right? Inzamam मुरली को जब निकलता, Inzamam rarely run out तो खैर भूल जाओ Inzamam का. हाँ. But वो stump There's जो है ना वो, a video out there, yeah, that video is greatest epic. video of all time. I think one of the best videos on YouTube ever is कौन सा वाला? कौन सा वाला? Inzamam के run outs जो है. He's not getting out. There's this guy, Compilation. Yeah, Navaid, completely. Oh, huge fans of this guy, Rob Linda. He's Rob. Rob Linder, yeah. हाँ हाँ He हाँ, has मैं देखा the उसका most रॉब लेंडर. extensive collection of cricket videos in the world. हाँ. आई नो मगर वो उसने इंजमाम ट्विटर पे की भी अच्छे खासे रखता है. आई थिंक हाँ, रॉब लिंडा ने ही अभी शेन ऑस्ट्रेलियन वॉर्न की पूरी कलेक्शन रखी थी. हाँ, उसने collection पूरी रखी थी और ना. अभी He's शेन वॉर्न he's की a उसने really ट्वीट्स रखी थी जबरदस्त बंदा थ्रेड की उसमें कि जिसमें आई थिंक Yes. वो बता रहा है कि फ्लिपर कराते से पहले वो उसने सेटअप जो करा था ना बैट्समैन को वो है. दिखाया, देन इवेंचुअली जो बोल्ड हुआ है बंदा. Eventually the flipper, yeah. This हाँ, तो guy. वो उसने उसकी कलेक्शन रखी थी पूरी, पता नहीं कहाँ से, अर्ली 90s से लेकर अभी He वो has a रीसेंट huge पास्ट तक. archive. Like उसका वो बंदे के पास हर चीज है. हाँ, He Like must have literally तो like वो people on a Twitter ask room him full of like servers. specific ball वगैरह के यार ये ball उसने ऐसे कराई थी क्या, and he finds it फाइंड्स somehow. इट. हाँ, पता नहीं कहाँ से Yeah, लेके He has आता like an ठीक है वो. encyclopedic memory too, कि उसको याद होता है. अच्छा तुम उस बॉल याद की बात रहता है यार. कर रहे हो. Like a मिर्जा इकबाल true. बेग है वो, इंटरनेशनल मिर्जा इकबाल बेग. हाँ, Yeah. मिर्जा इकबाल बेग. रॉब Yeah. बेग, रॉब बेग, Wrong. रॉब बेग. Wrong. बोले क्या बात तो है. खैर, but चलो इसका क्या कहते हैं, रैप अप करते हैं इस चीज़ को. आई थिंक जो यू एब्सोल्युटली, आई थिंक शेन वॉर्न को मेरे ख्याल से आई थिंक तेंदुलकर probably played the best. Best, yeah. वर्स्ट मैं समझता हूँ कि आई थिंक पाकिस्तान का हर प्लेयर Pakistan has as a probably हर whole, played बंदा था. the worst. as a whole. पूरी टीम थी वर्स्ट पूरी खेलती team थी. played him the worst as a whole. Yeah. Although Yusuf Yahana, when he was Yusuf Yahana, Yeah. scored like a very big 100 against I Warne. remember Salim Ilahi actually hit him for 83 runs. I remember Salim one. Ilahi, that's true. निकल के मारा था. Like this is just Also, weird also, stuff. also ये 2000 I think early 2000 या mid 2000 का जो Net टूर West था Indies का. ऑस्ट्रेलिया का, नहीं Right. ऑस्ट्रेलिया का टूर जो पाकिस्तान ने किया था, Hmm. जिसमें यूसुफ यहाना हिट हिम लाइक वो उसको बार बार आगे चढ़ के आउट, इवेंचुअली आई थिंक उसी ने उसको Hmm. किया था. बट आई थिंक बाय द टाइम यूसुफ यहाना It's, स्कोर्ड it's like लाइक one of those 130. things जैसे रज़ाक ने मैगरा को 5 चौके मार लिए थे. 5 चौके हाँ, मारे थे. तो वो एक वो मिथ है, एक हम लोग एक वो मिथ नहीं कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, एक वन ऑफ इंस्टेंसेस अटैच हो Yeah. जाते हैं, Like लेकिन जनरली or एज like अ when होल Razak was पाकिस्तानी टीम like प्लेड हिम द वर्स्ट. and मगर even I think Australia के साथ, like the Australian team in general, Pakistan हमेशा, their performance has not been that good. Like especially if it comes to competitions and knockout stages. ओह अगर या पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया मिल गया तो we're gone. तो गया. Like वैसे even इज इट recently, ट्रू, the इज World इट Cup, आल्सो T20 ट्रू World कि Cup में. शेन वॉर्न नेवर प्लेड इन लाइक जिम्बाब्वे एंड बांग्लादेश एंड द लाइक्स. I don't think He he never played that. toured those Really? countries because हाँ, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब when that was happening and Murli was doing that, he made a like conscious decision not to, क्योंकि I think he was like मैं मैं easy wickets नहीं लूंगा, I don't know, something like that. I'll have to Okay. check. I don't remember him bowling in Bangladesh. I I remember don't in know.
No, not Bangladesh. I think Zimbabwe. I think he played because Yeah, उस वक्त जो Zimbabwe एंडी has had फ्लावर a मैन lot of फ्लावर अबे good वाला वर्ल्ड जो players. वर्ल्ड दौर वर्ल्ड था. Every कप में तो team खेला is होगा मेरे actually को, quite टूर टू respectable. नहीं टूर जिम्बाब्वे। भी आई थिंक किया है. आई थिंक जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला है वो. अच्छा, मे बी, आई डोंट उस नो, जमाने में खैर। ये लोग उस जमाने में तो जिम्बाब्वे की टीम wasn't that Yeah, bad either. Zimbabwe team द अच्छी थी. पॉइंट इज के, HP, the Flowers, हाँ सारे हाँ, ग्रैंड फ्लावर्स एंडी फ्लावर Really मैकलम ब्रेंडन था ना. Johnson. नहीं नहीं, हाँ. लेकिन एट द पॉइंट इज के उसकी जितनी भी 700 विकेटें हैं, या जो भी बाई एक्सटेंशन आई थिंक हम्म. 900 हज़ार विकेटें हैं इन ऑल फॉर्म्स ऑफ द गेम, Yeah. दे weren't easy wickets, लाइक कोई Oh no. No. बच्चों को आउट करके उसने विकेट नहीं ली। और लेग स्पिनर की खासियत ये होती थी कि वो दो दो वक्तों पे आता था। हम्म. या तो आपकी टीम को प्रेशर डालना है, या आपकी सारे बॉलर पिट चुके हैं तो कहना है, यार आप वो लेग बचा दे। स्पिनर I mean, आता है. leg हाँ, spinner is the फर्स्ट थिंग। ultimate like attacking weapon, right? You don't use leg spinner to contain runs, right? Off spinner को आप use कर सकते हैं to contain runs, like नहीं नहीं वो तो आर्यन जैसे पार वाला होता है ने basically. सकलैन को इस्तेमाल किया है, मुरलीधरन Yeah. to an extent. Graham Swan was amazing at मुशी that. को हम मुशी को इतना वो नहीं करते। मुशी को ऑस्ट्रेलियंस बहुत हाईली रेट करते हैं, मुश्ताक अहमद मुश्ताक को। अहमद. हाँ, लाइक Yeah. ही वाज अ वेरी, लाइक उसको वो फेम ही नहीं मिली जो कि हम्म. बाकी लेग स्पिनर्स को हमारे मिली, But he was a जैसे very good bowler. बहुत अच्छा उस वक्त दानिश सकलैन कनेरिया को मुश्ताक मुश्ताक अहमद का जो कॉम्बो था हमारे पास कॉम्बो था, लेकिन लेग ऑस्ट्रेलिया. लेग और ऑफी का, वो बड़ा एक Yeah. लाइक बहुत अच्छा था. ज़बरदस्त कॉम्बो था वो। तो But another thing I think we should mention about Shane Warne was like he हाँ, made the because मैंने पढ़ा भी था कि he made the game look cool. मतलब he was he made always the a style icon within cricket as well. और नए hair right style लाना तो ये लाना, you know, He he had was that zinc in his eye, the like in zinc the exactly. जिंक Yeah. इन द आई। वैसे उसका अभी ये तुमने इंटरव्यू बड़ी देख रहा था मैं उसी किसका? शेन वॉर्न का कि he was like I was only 22 23 and मेरा इम्पैक्ट ऐसा हो गया था कि when I walk outside and मतलब वहाँ बच्चे हों या बड़े हों they all had the zinc, you know, या and they were like and he's like paparazzi following me like for the whole day and भाई he's वो like लाइक 22-23 उसका की तो उम्र में. उसकी मौत सही, तो अभी मैं देख रहा था कि द वैरायटी ऑफ पीपल कंडोलिंग हिज डेथ, अगर आप देखें ना, yeah, it Yeah. यूजुअली had like क्रिकेट, Mick Jagger, मिक जैगर, Elton Yeah. John, एल्टन Ed जॉन, Sheeran. सर केनी डेलग्लिश, हम्म. जेमी कैरेगर, लाइक इतने अजीब अजीब उसकी से वो लोग जो था कि वो लाइक ग्लोबल आइकॉन जिसे कह लो आप वो. कौन है वो, काइली मिनोग, हम्म. Yeah, she's Australian, though, right? Kelly हाँ Minogue? शी ऑस्ट्रेलियन, हाँ शी इज हाँ. ऑस्ट्रेलियन। He's getting a और state funeral, I think, which is also एलिजाबेथ हर्ली, आई that गेस was his वो तो उसकी like, एक्स थी ना. yeah. हाँ वो तो थी, लेकिन लाइक उसने बड़ी फुल लाइफ जी है अपनी। और हाँ. लाइक ही न्यू प्रीटी मच एवरीवन, लाइक वो मैं अभी वो डेविड लॉयड का इंटरव्यू देख रहा था, हम्म. जिसने उसकी मौत के बाद लाइक उसने इंटरव्यू दिया, वो बता रहा था कि बिकॉज ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम, राइट, कमेंट्री बॉक्स में, Yep. एशेस में। Yep. तो बता रहा था कि यार उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती थी ना, वो सच वे कॉन्टैक्ट लिस्ट, ही न्यू एवरीबडी। कह रहा है Yeah. कि मैं मेरे हुआ था, उसने एक फनी वाकया बताया था, उसने बोला कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे थे तो मेरे ग्लासेस टूट गए थे, हम्म. जो डेविड लॉयड के ग्लासेस थे। तो उसने आया, अच्छा शेन वॉर्न के साथ रूम में कौन आया? शेन वॉर्न ऐसे आ रहे हैं बातें चीतें करते हुए, एंड इट्स एड शीरन विद हिम। तो पहले तो डेविड लॉयड ने बोला कि लाइक व्हाट इज हैपनिंग है, लाइक एड शीरन विद शेन वॉर्न, सच अ वियर्ड थिंग, It's राइट? an odd तो couple, उसने yeah. बोला, फिर उसने आके शेन वॉर्न ने डेविड लॉयड से पूछा कि तुम्हारी ग्लासेस क्या हो? कहा कि यार टूट गए ये, वो आई हैव टू मेक श्योर कुछ चेंज करूँ। तो उसने मुझे देखा कि कौन से हैं, उसने चेक किया तो उसने लिखा था काइली मिनोग एडिशन समथिंग ऐसा था। Yeah. तो उसने कहा "ओ यार मैं भी"। अब ज़ाहिर है काइली मिनोग खुद ग्लासेस थोड़ी बनाती थी, उसने तो उसमें हाँ. नाम ब्रांड को दिया हो जो भी। उसने काइली मिनोग को कॉल कर दी उसी वक्त। फिर उसने काइली मिनोग ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि अभी तुम लोग जो कमेंट्री कर रहे हो, मेक श्योर कि वो ग्लासेस पहने वो, और वो जहाँ टीवी पे आए, तो यानी कि जब उस पर कैमरा आया तो ही इज़ वेयरिंग दोज ग्लासेस, जस्ट वांट टू सी कि कौन से ग्लासेस हैं। कौन सा वाला. तो वो उसने पेन पेन के ग्लास दिखाए उसको, एंड देन वो डेविड लॉयड बता रहा था कि आई थिंक अ फ्यू डेज लेटर उसके घर में उसने शैंपेन भिजाई, न्यू ग्लासेस और पता नहीं क्या गिफ्ट्स भिजा दी, काइली मिनोग से डायरेक्ट आए। वाह. तो कह रहा है, वो कह रहा था कि इतना सच अ वियर्ड थिंग कि दिस गाय Yeah. न्यू प्रीटी मच एवरीबॉडी, लाइक उसको पाओ कि तुम्हें फलां से मिलना है, देन ही न्यू देम। लाइक Yeah. उसका जमामा खान का भी कोई रिलेशन आई थिंक वो था, लाइक एट वन हम्म. पॉइंट दे वर आल्सो लिंक्ड, बट एटलीस्ट ही न्यू हर, ऐसा नहीं था Yeah, कि yeah, ही न्यू। yeah. I think you guys should check out Mark Nicholas's tribute to him Yeah. on And उसकी ESPN. एक मूवी भी आई है बाय द वे, डॉक्यूमेंट्री there's भी a आई है movie जो coming out called Warne, I think. Yeah. नहीं नहीं क्या आई चुकी है, वॉर्न है, आई थिंक अभी उसने उसी को तो Amazon प्लग पे करा आई था है. वो, अमेजोन पे Amazon आई है पे आई वो, है. एशेस Yeah. में उसको प्लग किया उसने, अभी लाइक तक अभी देखा नहीं है रिसेंटली आई मैंने. है। But मैंने I भी नहीं want to देखा, मैं watch. देखूंगा। I'm gonna read his autobiography to No Spin, Joy. I think हाँ. that was also a really uh, praised book. I'll have to check it out.
हाँ, Uh, Hmm. तो ये Boogie 2-3 Mark सीज़न Nicholas wrote it. He was the writer for his Mark autobiography. Nicholas was very close to Australian cricket and Shane Warne in general. हुँ, Yeah. हुँ, हुँ। वो एक like हाँ मैंने उसका देखा नहीं ट्रिब्यूट आई हैव टू वॉच इट आई एम प्रीटी श्योर बड़ा एक इमोशनल होगा Yeah, वो really, really, really good. It's हुँ, on Crick Info. um, But so anyway I think uh, wrapping it up I think one word comes to mind and that is all-star legend जो भी लेजेंड। आप सोचो या, तो आप I think या, legend of the game greatest of all time यप। क्रिकेट में गोट्स हैं कम हैं लेकिन जो हैं वो लेजिटिमेट गोट्स हैं यानी कि हुँ, फुटबॉल हुँ, के अंदर यू थ्रो दैट गोट वर्ड अराउंड फॉर फन yeah, बहुत हुँ, से लोग बैंटर में थ्रो अराउंड करते हैं लेकिन he क्रिकेट was में या, जब part यू of the top five cricketers of the century, and that was in 1999 2000, right? So या, या he आई थिंक really established himself ब्रैडमन हाँ as हुँ, basically one of the best. यप, And that was ओ I या think या before he hit his stride right after 2000. हुँ। And deservedly so. I think he's also in the Wisden's all-time 11. 11 हैज टू ही बी इज़, ही इज़, हैज टू बी He is there एंड officially विज़डन now. में, I think विज़डन में। him. and he does make and he makes no qualms about attributing a lot of his success to the great Abdul Qadir by the way या, he always he talked about says that. that पहले मैं समझता था कि ये भी एक वो myth नहीं होता जो हमारे Urban इनके with the Salford and World Cup की ball है ना. वर्ल्ड कप हाँ, की But बॉलिंग वाला सीन तो लेकिन दिस वाज लेजिटिमेट लाइक उसने खुद भी एडमिट किया है अब्दुल कादिर लाइक वाज अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन हिम हुँ, एंड देन ही एक्चुअली हुँ, लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वन टू वन भी सीखी उसने जाके हुँ, बस जो कि व्हिच गॉट मी थिंकिंग कि दुनिया के स्पिन के जो दो आर्ट्स हैं ऑफ स्पिनर हुँ, और लेग स्पिनर both of these arts are pioneered by Pakistanis पाकिस्तानीज़, या। and then also fast Not just bowling that and reverse. fast, रिवर्स स्विंग कौन लेके आया है? दैट्स हाँ वही मैं कह रहा पाकिस्तानीज़। हूँ इट्स सच अ वियर्ड थिंग कि बॉलिंग डिपार्टमेंट एक तरीके से पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट स्किल एंड हुँ, आर्ट आर्ट को हुँ, जो लाइक क्योंकि आई थिंक although Richie Beno was a leg spinner हुँ, लेकिन अब्दुल कादिर again took that to the next level नेक्स्ट there, लेवल, या। in the 70s and 80s जिसमें वो like he was a constant in the Pakistani team and he won हुँ, Pakistan matches हुँ, and then Shane Warne took it to the absolute next level या, आई ऑफ डोंट spinner का तो I think prior to Mushtaq there was like Saklan there was like probably ट्रेडिशनल बस यूं घुमा के बॉल फेंक दो स्लो बॉलर कहते थे उससे ऑफ या, स्पिनर तो कोई आर्ट था ही नहीं अभी नहीं है। until until Saklan Mushtaq came onto the scene and he actually made it an art दूसरा एंड ऑल दैट स्टफ वो सब जिसके बाद ये सारे आए अजमल्स एंड हरभजन्स एंड अश्विन नाउ हुँ, और तो मेरे ख्याल से कोई ऑफ स्पिनर डजंट कम Graham टू Swan माइंड was big for a while. ग्राम स्वान और आई थिंक इनका ही एक और है ऑस्ट्रेलिया का जो है यार नेथन लायन नेथन कैसे लायन बोल हाँ, नेथन Gary. लायन Uh, हाँ Gary हाँ exactly but yeah greatest of all time for me an amazing personality which is why I feel like कि इसको उसके बारे में बात करते हुए I'm feeling more celebratory as opposed to sad obviously you're sad कि या, when a hero of yours passes away but because he's done so much like या, in a short span of life it felt like Maradona passing away क्योंकि Maradona को you felt sad but then हुँ, you feel like you've seen a lot from him like from on the football pitch and off the football pitch एंड इट्स उसका जो so many things he's रहेगा done. इन्फ्लुएंस भी वो हमेशा रहे इट्स नॉट लाइक इट्स गोना गो अवे व्हाट ही Oh हैज no डन no, फॉर I द think गेम SEG में गोना they're लास्ट naming फॉरएवर a enclosure या for him. उसका हुँ, उन्होंने I think statue तो पहले से बना दिया था. बना होता है हाँ उसको so a lot of these things he's already like उसने एक्सपीरियंस कर लिया था अपनी या जो गोटनेस है ना गोटनेस का उसने फ़ायदा उठाया लाइक हुँ, वर्ल्ड को उसने एक्सपीरियंस किया कि लोग रिकॉग्नाइज हिम एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या बॉलिंग शेन एक हुँ, फ्रेज थी जो कि हर बच्चा हर गली वो में जब हाँ, बॉलिंग करता था गिलक्रिस्ट या जब Gilchrist, जब बैट्समैन बीट होता था हाँ, बॉलिंग शेन ये तो एक बॉलिंग नहीं है सबको पता था ये चीज़ तो होती थी आई थिंक गिलक्रिस्ट का भी बड़ा ज़बरदस्त ट्रिब्यूट था वो कहता था कि ट्वीट जो थी ट्विटर उसकी हाँ राइट उसने कहा था कि मी एंड ईएन is the हीली best keeper now, right? Yeah. वी फील सो possessed के हमने टेस्ट अरीना में वी वर द ओनली विकेट कीपर्स हु एक्चुअली केप्ट हिट Yeah, and he एंड had Oh, the वो yeah. कैसे ना best seat in the house as वैसे well. Yeah, एग्जैक्टली अमेजिंग यार सोचो एक जीनियस आपके सामने बॉल कर रहा है यू yeah. एक्सपीरियंसिंग ऑल ऑफ दैट के अब यहाँ से आएगी ये और वो उनकी मेरे ख्याल से वो तो केमिस्ट्री बता भी भी रहा कितनी था अच्छी होती होगी ना because they knew what he's thinking and what he's gonna ball और वो next to कर the भी देता keeper. था वो कि अब देख Exactly. अब मैं बाहर निकलेगी और ये एज करेगा रेडी रहना यानी वो कर Yeah, भी देता होगा सोचो yeah. कीपर के लिए So भी कितनी आसानी होती है कि कोई अन हम कहने कि अचानक से कोई चीज़ नहीं आती होगी उसके पास ही हाँ, न्यू के उधर क्या चल रहा है वो भी आर्ट बता रहा है कि ये चल रहा है वो चल प्लान सारे उनके डिसाइड होते थे दे वर जीनियसेस yeah. but anyway he will be sorely missed He will be, yeah. But I wish he was in Pakistan for the For the series as series. part Yeah. of the commentary team but then yep. अगर But he अगर has an खुदा ना undeniable खास्ता legacy, खुदा right? ना खास्ता अगर पाकिस्तान में
if this happened, मेरी तो फट जाती फिर सीरियसली, मेरी फट, इवन अगर उसकी नेचुरल डेथ थी, मेरी फट जाती, मैं कहा वो फक, ये Oh यहाँ नहीं my. होना चाहिए था। Yeah, Like yeah, some अगर उसकी Woolmer-esque लिखी थी, kind of natural हाँ, death. अगर उसकी लिखी हुई थी, अगर लिखी हुई थी चलो अच्छा है, लाइक अच्छा तो नहीं, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा yep. एक स्टिग्मा हो जाता कि मैंने क्या अजीब सा सीन था, पता नहीं क्या है, खैर एनीवे, Yeah. बट आई वुड हैव लव टू सी हिम इन पाकिस्तान, लाइक कमेंट्री टीम Mm. में। आई थिंक ही इज कमेंटेटेड ऑन पाकिस्तान इंडिया सीरीज फॉर व्हाइल, दुबई में भी एंड Yeah. ऑस्ट्रेलिया में भी, बट इट वुड हैव बीन नाइस, बट मे बी ही वाजंट अवेलेबल और व्हाटएवर। um yeah, yeah, those are my final words. Any thoughts from you guys? No, I think he pretty much covered it Mm. off. Like the greatest spin bowler ever. One of the. Yeah, I mean, he's always going to be in the greatest 11 of all time. He has yeah, basically secured that status of his. His legacy is secure. It's tough to see him go because he all like I said, Manabi Pelegata, he had a lot yeah. to contribute Grew post Oh up yeah. career, watching Oh but yeah. him. he led a Mm. really complete life. But yeah, I mean, rest in peace. That's all we can say. Yeah, exactly. Yeah. हाँ, मैं एक चीज़ दिमाग में आई मेरे, and we'll finish it off. I think another reason why he's probably better than Murli, which we think is, he's actually captain. Like he's a leader as well, not just Oh the yeah, artist. yeah. He's led teams, like he's led IPL, तुमने बात की BBL में, he's led teams. Mm-hmm. I think he's probably done a captaincy, like Australian captaincy, a couple of times as well. Not as I much. think I read it the other day. He captained 11 matches and won 10. So he तो was तो Oh pretty yeah, good. that तो he speaks. was a tactical genius from a like overall perspective, not just bowling, Hmm. बट वो भी उसके अंदर एक्सपर्ट था जो कि मुरली के अंदर नहीं था। I think नथिंग बैड इन we दैट। are very lucky to have witnessed that golden era of cricket. You know, ओह यस, in फॉर our श्योर। अभी teenagers अभी as जो well. लोग देख रहे हैं क्रिकेट, दे हैव Nah, नो आइडिया, yeah, दे हैव नो absolutely. आइडिया व्हाट स्किल लुक्स लाइक एंड स्किल्स क्या Yeah, होती थी, क्योंकि अब स्किल नहीं मिलती आपको, अब ज़्यादातर बस लाइक पॉलिश it's प्रोडक्ट बहुत पॉलिश मिलता है आपको, जैसे कि द huh, बाबर आजम्स एंड विराट कोहलीज ऑफ दिस yeah. वर्ल्ड, You पॉलिश don't प्रोडक्ट है। see that like rivalry because you don't have that level of skill. I don't think Hmm. हाँ, स्किल there's नहीं है, there's this स्किल नहीं है। balance Yeah, lacking. वो टेस्ट मैच देख लो, उस वक्त उस जमाने में we used to sit down and watch टेस्ट मैचेस properly. अब किसी से भी अभी इस एज में किसी को बोलो ना टेस्ट मैच देखने वाले, नहीं, who's gonna sit down and watch टेस्ट मैच? जबकि I think for me my favorite series of cricket like of all time is the Ashes of हाँ 2005. उसमें जितना हाँ। मैंने एंजॉय किया वो मैंने किसी वनडे सीरीज में भी एंजॉय किया जो No, मैंने it's उस very टेस्ट hard सीरीज to में because एंजॉय yeah, what's his अबे क्राउड storyline फुल into हाउस that होता था। किया. Yeah, or session by session swings. You don't it experience it was, any yeah, other it form. was just So different level. So हाउसफुल very, आता था, it wasn't a joke anyway. yeah. But yeah, and yeah, all the condolences to his family and fans, and yeah, it was like I said, a celebratory kind of an episode, uh, Mhm. celebrating the life and our experiences and our stories around Shane Warne. Hope you guys liked the episode and our discussion. Don't forget to subscribe on YouTube and follow us on Spotify and Google Podcast, Apple Podcasts, and drop us a rating as well. I think Apple and Spotify are have open they to started rate. coming through? I haven't seen it, but I think you can. तुम लोग खुद तो कर लो पहले। तो don't forget to rate the podcast on Spotify and Apple. And yeah, we'll be back with another good discussion down the line. All right. Thanks. Take care. Bye. Okay.